मैम एक क्वेश्चन पूछना। यस प्लीज। मैम वो जो पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें वो ईयर वन में वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में स्टार्ट करना था 1 लाख में से 20,000, तो ईयर वन में जो 80,000 पे लगेगा इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर में कैसे होगा फिर? अगर वो 20,000 माइनस होंगे तो फिफ्थ ईयर में आके तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक सेकेंड, एक अगर सेकेंड। आप हाँ एक्सेल में समझा सकें तो। हाँ, एक सेकेंड। आनंद सर प्लीज स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग टिल देन। हाँ, तो ये क्वेश्चन वाज कि अगर हम वो 1 लाख रुपए की बिगनिंग में पे करते हैं, सी मेरा को जो क्वेश्चन ड्राफ्टेड था वो इस मैनर में था कि हम वो एट द एंड ऑफ द ईयर पे कर रहे हैं, इसलिए वो 5 इयर्स तक जा रहा था। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे मेंशन होगा कि आप एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट नंबर ऑफ इयर्स बिकम्स n-1। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपकी 5 जानी। जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो बेसिकली कंसेप्ट सेम रहेगा, इस जस्ट वो ईएमआई जो आप पे कर रहे हैं ना उसके नेम्स चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हायर परचेज में आप लीज रेंटल पे नहीं करोगे, उसमें आप हायर परचेज चार्जेस पे करोगे। हाँ जी। तो वो एक मॉडल क्वेश्चन था, मॉडल केस स्टडी थी। फर्दर यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस मेंशन्ड इन द एसएलएम, बट अगेन
PYQ तो है नहीं MBA के, तो MCOM वाले जो पेपर हैं वो अगर शेयर कर देंगे तो उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे आई थिंक। एमकॉम वाले आप कर सकते हैं थियोरिटिकल पोर्शन, देन अगेन क्योंकि न्यूमेरिकल, अगेन आपके पास न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, बट वो असेसमेंट ईयर पुराना वाला होगा। तो देन अगेन आई रिक्वेस्ट यू, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वो करंट आपका प्रीवियस जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो है 24-25 वाला, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करना। पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बट देन अगेन अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो जो न्यूमेरिकल्स मैंने क्लासेस ऑनलाइन सेशंस में करवाए हैं along with the SLM, those are more than enough for you to practice. तो उनको दोबारा शेयर कर देना मैम, उसको फिर हम अपना प्रैक्टिस के लिए अलग से कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन होते हैं मैं ChatGPT पे डाल देता हूँ एंड वहां से मैं पूरा सोल्यूशन देख लेता हूँ। ओके ओके ओके। बट देन अगेन चैट जीपीटी पे न्यूमेरिकल पे ना मैं इतना रिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ज्यादा ट्विस्टेड या हिडन फिगर्स हो ना तो वो उसको एड्रेस नहीं करता है। तो मैं आपके आंसर से वेरीफाई कर लूंगा। आई विल नॉट गो ब्लाइंडली व्हाट ChatGPT गिव्स द आंसर, आई विल वेरीफाई फ्रॉम योर दैट वन आंसर, बिकॉज जो आप कराते हैं उसको नोट डाउन करना थोड़ा सा मिस हो जाता है कहीं कहीं, तो इट इज नॉट टू रिलाई अपॉन माय ओन हैंडराइटिंग। तो हाँ बट आप एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के लिए यू कैन यूज दैट एआई, नॉट एन इशू। ठीक है ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए मैं यूज करूंगा, थियोरेटिकल तो मैं इससे देख लूंगा, SLM से देख लूंगा। न्यूमेरिकल का थोड़ा सा मुझे इशू रहता है, तो आई नीड ए रिलायबल सॉल्यूशन। So I find ChatGPT addresses to some extent, but cross check with your answer. I'll cross check with your answer. Sure sir, sure. Okay. तो एक थियोरेटिकल टॉपिक थोड़ा सा बचा था, विल स्टार्ट विद दैट एंड देन विल स्टार्ट फॉलो अप विद द रिवीजन ऑफ द होल कोर्स, ठीक है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज डबल टैक्सेशन। नाउ डबल टैक्सेशन के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा थोड़ा हिंट किया है, बट नाउ इज द टाइम कि अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? डबल टैक्सेशन इज बेसिकली टैक्सिंग द सेम इनकम इन 2 or more countries. So for example, Indian company taxed in both US and India or income earned in US. So अगर इंडिया की कोई कंपनी है जो यूएस में यूएस की किसी कंपनी से डिविडेंड अर्न कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है यूएस में जो अथॉरिटीज है वो उस इंडियन कंपनी के ऊपर टैक्स लगाएंगी। एंड सिमिलरली क्योंकि वो एक इंडियन कंपनी है तो इंडिया वाले भी, इंडियन अथॉरिटीज भी उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। नाउ दिस इज द सिनेरियो फॉर डबल टैक्सेशन। नाउ हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस डबल टैक्सेशन थिंग, कि मैं क्यों एक ही जनरेटेड इनकम के ऊपर 2 अलग अलग कंट्रीज में टैक्स पे कर रही हूँ। तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डबल टैक्सेशन को सॉल्व करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूल्स। तो पहला रूल होता है सोर्स रूल, वेयर द टैक्स बाय द कंट्री वेयर इनकम ओरिजिनेट्स। तो हमारे एग्जांपल में यूएस में अगर इनकम ओरिजिनेट हो रही है डिविडेंड इनकम, तो सोर्स रूल कहता है कि वो वाली कंट्री टैक्स लगाएगी। और रेसिडेंस रूल कहता है कि जिस कंट्री से बिलोंग करती है वो कंपनी, जहां पे वो रेसिडेंट है, ठीक है, वो वाली कंट्री उस इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगी। मूविंग ऑन, there are 2 types of relief available for double taxation. The first one is mentioned
ओके, कहाँ पे मिस आउट हुआ था, कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग? मैम 6,50,000 में से 38,000 माइनस किए थे और 25,000। ठीक है, फिर 25,000 माइनस किए तो हमारी टोटल इनकम आ गई 5,87,000 की। नाउ ओवर द इनकम ऑफ 5,87,000 यू हैव टू कैलकुलेट द टैक्स। ठीक है, अब जो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए शी इज एन इंडिविजुअल असेसी, तो हम इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स देखेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इंडिविजुअल टैक्स स्लैब्स। यहाँ पे मेंशन है, एक मिनट में देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फॉर 5,87,000 टैक्स लिमिट बनेगी फॉर द फर्स्ट 3 लाख रुपीज, नो टैक्सेशन। ठीक है, अगेन जब आप टैक्स स्लैब्स देख रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि सीनियर सिटीजन का आपको देखना है इस केस में, क्योंकि जो एसएससी है वो मेरी सीनियर सिटीजन है। तो फॉर द फर्स्ट 3 लाख देयर इज नो टैक्सेशन, एंड फॉर द नेक्स्ट 2 लाख रुपीज द डिफरेंस बिटवीन 3 लाख टू 5 लाख इज 2 लाख रुपीज, और इस 2 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा वो 5% लगेगा। ओके, जो मेरी टोटल इनकम है वो है 5,87,000। उस 5,87,000 में पहले 3 लाख के ऊपर नो टैक्स, दैट इज टैक्स एग्जम्प्टेड। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 3 लाख टू 5 लाख, तो डिफरेंस बिटवीन 5 लाख टू 3 लाख इज 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख के ऊपर जो आपका टैक्स लगेगा दैट इज एट द रेट 5%। एंड फॉर द बैलेंस, ठीक है, हमारे पास बैलेंस बचा है 87,000, सॉरी 5,87,000 माइनस 3 लाख रुपीज माइनस 2 लाख रुपीज, बैलेंस बचा है 87,000, और उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट है एट द रेट 20%, 17,400। तो जो मेरा टोटल टैक्स बना दैट इज द सम ऑफ 10,000 प्लस 17,400, ये मेरा टैक्स का अमाउंट बना। अब मेरे टैक्स के ऊपर लगता है सरचार्ज और एजुकेशन सेस, बट क्या मेरा इस केस में सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? मैम इनकम तो इतनी है, हाँ जी, इनकम तो इतनी है नहीं, तो सरचार्ज एप्लीकेबल क्यों होगा? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, क्या मेरा सरचार्ज एप्लीकेबल होगा? होना तो नहीं चाहिए। नहीं होगा, क्योंकि सरचार्ज के जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दैट इज 50 लाख रुपीज फॉर इंडिविजुअल, फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो इंडिविजुअल है तो 50 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है तो उसके ऊपर सरचार्ज, तब हमारा सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो टोटल नेट टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख से कम है, तो हमारा कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सरचार्ज तो नहीं है, बट सरचार्ज के बाद एजुकेशन सेस तो होगा। हाँ जी, 4%। ठीक है, एजुकेशन सेस हम लगाएंगे इस टैक्स अमाउंट का 4%, 1096। तो जो मेरा टोटल टैक्स निकल के आया है दैट इज 27,400 प्लस 1,096। नाउ द थिंग इज, ये जो टोटल टैक्स पेबल है इसके अंदर मेरी फॉरेन इनकम इंक्लूडेड थी? हाँ yes जी, or no? हाँ अब जी। द थिंग, जब मेरी फॉरेन इनकम इंक्लूडेड है और उस फॉरेन इनकम के ऊपर मैं ऑलरेडी 15,000 का टैक्स अदर कंट्री में पे कर चुकी हूँ, तो दिस अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूड्स डबल टैक्सेशन। Now, हाँ जी, how to resolve this issue under Section 90 when there is no agreement between the two countries? उस केस में हम क्या करते हैं, we compute the average Indian tax rate and the average foreign tax rate. ठीक है, अब ये एवरेज इंडियन टैक्स रेट क्या होता है? जब हमारा किसी कंट्री से डीटीए नहीं है तो हम एवरेज रेट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन के।
एग्जैक्टली। तो हमारा जो टैक्स बना वो 28,496 रुपए का बना ओवर द इनकम ऑफ 5,87,000। ठीक है, 28,496 का हमारा टैक्स बना ओवर द इनकम ऑफ 5,87,000। तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ टैक्स कैलकुलेट करूं तो ये बनेगा कितना, 28,496 डिवाइडेड बाय 5,87,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 4.854%। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है, प्रिंटिंग का एरर है। ठीक है, मैं फिर भी आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, एवरेज इंडियन टैक्स रेट that is 28,496 multiplied by 100 divided by income over which the tax is paid। जीरोस कम कर देते हैं। ठीक है, ये है मेरा एवरेज इंडियन टैक्स रेट। अब बात करते हैं हमारी एवरेज फॉरेन टैक्स रेट। तो फॉरेन इनकम कितनी थी मेरी, 1,50,000 मेरी फॉरेन इनकम है 1,50,000 की, और उस 1,50,000 के ऊपर मैंने 15,000 का टैक्स पे किया। तो इट्स डायरेक्टली आई कैन से 10%। मैं फिर भी कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ। 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टैक्स रेट्स में से सिलेक्ट करेंगे विच एवर इज लोअर। सो विच इज द लोअर टैक्स रेट, 10 rupees. 10 rupees. Oh, 4.8. right, 4.855 which is the एवरेज इंडियन टैक्स रेट। ठीक है, और इसमें कोई रूल नहीं है कि हर बार हम इंडियन टैक्स रेट ही लेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे और दोनों में से जो भी लोअर वाला होगा ना, हम हमेशा वो लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे लेंगे 4.855। नाउ 4.855% ऑफ द फॉरेन इनकम मल्टीप्लाइड बाय फॉरेन इनकम मेरी 1,50,000 की है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मेरा परसेंटेज फॉर्म में था 7281.772, इसको डेसिमल से डाल देते हैं। ठीक है, तो 7,282 रुपीज का मैं रिलीफ क्लेम कर सकती हूँ वाइल पेइंग टैक्सेस इन इंडिया। सॉरी, राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते 7280। या सर आवाज कट रही है। मैम मैं कह रहा हूँ इसे राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते 7280। वो अल्टीमेटली हम करते ही है। मैं एक्चुअली जब इनकम टैक्स अथॉरिटी राउंडिंग ऑफ करती है ना, वो बिल्कुल लास्ट में करती है। जो फाइनल डिजिट आ जाती है ना,
हाँ जी सर। एक एक करके बताइए मैम, एक एक करके, ये थोड़ा सा हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ जी। और एक डिडक्शन आती है आपकी ATU में। ये सारी प्रोमिनेंट डिडक्शंस है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। हैव यू मेड अ नोट ऑफ इट और शुड आई रिपीट क्या वंस आप एक अगेन? बार, हाँ रिपीट कर दीजिए, हाँ जी। और सबसे लिमिट बता पहले देना, 80। उसमें लिमिट भी, हाँ। हाँ जी। लिमिट भी होती है ना, जैसे ATC में 1,50,000 की लिमिट है, अपर लिमिट, मैक्सिमम दैट इज परमिसिबल, लाइक सर वो अदर आपकी सेक्शन वॉइस में भी नहीं क्या आ रही। क्या लिमिट है वो। हाँ मैम हाँ आप हाँ रिपीट कर दीजिए, आप रिपीट कर दीजिए। ओके। सबसे पहले ATC की अम्ब्रेला डिडक्शन, उसमें सारी आ जाएंगी आपकी, ATCC, ATCCC, ATCCD, सब आपको करनी है। ठीक है। उसके बाद ATD, D stands for dog, and ATG, G stands for goat। ATG के बाद ATM, ATM for monkey। ATTTA, TTA means tiger, tiger, and एरोप्लेन। ATTTB, हाँ एरोप्लेन, ATTTB टाइगर, टाइगर बैट। ठीक है। और फिर है आपकी ATU, ATJJ, एक सेकंड में चेक करती हूँ, ATJJA है या B है? न्यू एम्प्लॉइज वाली है, हायरिंग एम्प्लॉइज, ATJJA। हाँ जी। ATJJA ये एम्प्लॉइज रिलेटेड है। ठीक है। एंड देन ATU डिसेबिलिटी रिलेटेड है, कि अगर कोई पर्सन है जो डिसेबल है उसको एडिशनल क्लेम मिल सकता है, डिडक्शन, वो एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैम ये चैट में लिख सकेंगे आप, ये जो आप जो बता रही हैं चैट में लिख देंगे आप? मैं आई डोंट नो इफ माय चैट इज वर्किंग। चैट इज वर्किंग है, टर्न्ड ऑफ। वर्किंग। नहीं नहीं सर, मेरे मेरे हैंड से चैट इज इंट अवेलेबल। तो मैम मैं मेल पे पूछ लूंगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा फिर आगे। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन, डू वेरी सेंड मी अ नोट, फाइन, हाँ कि मैं मेल में डाल दूँ। गुड। ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनी थैंक फर्दर यू। डाउट? मैं देखती हूँ एक बार SLM में न्यूमेरिकल है 91, सॉरी 90 को रेटेड तो है, 91 रेटेड है। बायलैटरल रिलीफ मेरे को चेक करना है। नहीं, बायलैटरल रिलीफ पे न्यूमेरिकल नहीं है। ओके, सो बायलैटरल रिलीफ मैम इस पे आ जाएगा ऐसा? ये यस सर। यस सर। ना इसमें टैक्सेशन के ऊपर, अगेन सर आई एम नॉट कैचिंग योर डबल वॉइस। टैक्सेशन, राकेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए तो। टैक्सेशन था न्यूमेरिकल का। अगेन सर आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। डबल टैक्सेशन पर न्यूमेरिकल आएगा क्या? डबल टैक्सेशन पे न्यूमेरिकल आई डोंट थिंक सो, ये थियोरिटिकल ही है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्योरी, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया था। गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैम ये लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, पहले आई थिंक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ राइट राइट राइट। ओके देन मैं बायलैटरल रिलीफ के बारे में आपको बता रही थी। बायलैटरल रिलीफ के अंदर आपका अलग अलग कंट्रीज के साथ ना अग्रीमेंट होता है। ठीक है। तो जो DTAA की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, उसके अंदर कैलकुलेशंस उस पर्टिकुलरली अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है। नाउ इंडिया हैज 100+ DTAA agreements with different countries, so we have different types of calculation for each and every agreement. So it totally depends कि आपकी इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है। ठीक है। तो आपको उस
DTA एग्रीमेंट को रेफर करना पड़ेगा और उसमें जो कैलकुलेशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, फिर फर्दर अपनी टैक्स कैलकुलेशन करते हैं। तो जनरली जो होता है वो दो टाइप के मॉडल होते हैं, दो टाइप के अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट होते हैं। या तो वो यूएन बेस्ड होता है, यूएन, आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। उन्होंने खुद का अपना एक सैंपल या समझ लीजिए टेम्पलेट ड्राफ्ट डीटीए एग्रीमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, विच एक्चुअली फेवर्स द सोर्स कंट्री। फेवर्स द सोर्स कंट्री का मतलब है कि विच अलाउज द सोर्स कंट्री मींस द कंट्री वेयर द इनकम हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। So UN model basically allows the source country to tax that double income coming under the double taxation, and it is always preferred by the developing nations, ठीक है। And then there's an OECD model. OECD model stands for एक सेकेंड, OECD ने भी अपना एक ड्राफ्ट मॉडल, एक अग्रीमेंट दिया हुआ है विच एक्चुअली फेवर्स द रेसिडेंस कंट्री। रेसिडेंस कंट्री मींस जिस कंट्री के अंदर वो कंपनी रेसिडेंट है या वो इंडिविजुअल रेसिडेंट है, ठीक है, उस कंट्री को अलाउ करती है कि वो अपना टैक्स कलेक्ट करे ओवर द इनकम कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डबल टैक्सेशन। और अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस की, तो डेवलप्ड नेशंस जो है वो प्रेफर करते हैं OECD मॉडल, और जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो UN मॉडल करते हैं। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग नेशन फॉलोज द UN मॉडल फॉर अग्रीमेंट ड्राफ्टिंग अग्रीमेंट्स। Am I clear? हाँ जी मैम, हाँ जी। Any further doubt? Once again, ma'am, once again. Yes, sir. Hello. Okay, fine. Moving further. हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी लिमिटेड स्पेसिफिक इनकम टाइप्स, ठीक है। ये लिमिटेड में बायलैटरल रिलीफ जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी टाइप ऑफ इनकम एक्चुअली में डिस्कस होती है। तो ये टाइप ऑफ इनकम्स है जो आती है अंडर द लिमिटेड ड्राफ्टेड अग्रीमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ नो हाउ एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बाय द नॉन रेसिडेंट्स। अब इनको हम कैसे डील करते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेशन में। अगर इंटरेस्ट है then it will be taxed if it is paid by the Indian resident, and TDS applies according to under section 195. तो TDS जो apply होता है that is 10% over the interest income. If we talk about royalty, royalty is taxed under section 9 subsection 1 part 6, which is actually included under income from other sources. But any expenses related to attainment of or procurement of royalty is actually deductible from your income under the head income from other sources. Similarly, fees for technical services which actually cover consultancies, technical managerial services, जो अभी जैसे हमने एग्जांपल में बात करी थी, ठीक है, कि जो शोभिता थी, क्या नाम था, शोभा नाम था आई गेस, हमारे एसएससी का। हाँ जी, हाँ जी। वो किसी पर्टिकुलर नेशन के अंदर अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज डिलीवर कर रही थी, शोभा कुमारी, ठीक है। तो उसका हम कैसे टैक्स करते हैं इंडिया के अंदर। देन ट्रांसफर ऑफ नो हाउ। ट्रांसफर ऑफ नो हाउ का मतलब है बेसिकली आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हो, ठीक है। You are not providing consultancies, but you are sharing knowledge. For example, if I am going to some B school in US or UK or delivering a particular lecture over here or delivering a workshop, so basically I am transferring my know-how, ठीक है। Or over here the given example is pharma know-how from UK company, ठीक है। एक यूके की कंपनी है, उन्होंने आगे अपने मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने की जो प्रोसेसेस हैं
वो इंडियन कंपनी के साथ डिस्कस किए, तो ऑब्वियसली यू विल बी पेइंग समथिंग टू देम, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो जब हम उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड अंडर द बायलैटरल रिलेशंस। Then comes your export of goods by non-residents. So if there is any non-resident in India, whether a company or an individual, ठीक है, और वो अपने लिए गुड्स वो अपने गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से बाहर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर बायलैटरल। नेक्स्ट टॉपिक इज योर transfer pricing. Let me see, where do I have this PPT? अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? Let's just understand that. Basically, when there are more than 2 associated companies, ठीक है, अभी associated companies क्या होती है? होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, या फिर पेरेंट कंपनी जिनकी अपनी डिफरेंट ब्रांचेस हैं ओवरसीज, ऐसी कंपनीज को हम एसोसिएटेड कंपनीज बोलते हैं। नाउ द प्रॉब्लम विद एसोसिएटेड कंपनीज इज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं, यहाँ पे मैं रेफरेंस भी दूंगी मॉरिशियस ट्रीटी का। मॉरिशियस एज अ कंट्री इज ट्रीटेड एज अ टैक्स हेवन। अब इस कंट्री को टैक्स हेवन क्यों माना जाता है? सबसे पहली बात, अब मॉरिशियस टैक्स हेवन इसलिए भी है क्योंकि वहां पे हाई जो इनकम है ना, जो गवर्नमेंट है, वो हाईली डिपेंडेंट है ओवर टूरिज्म टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द कंट्री, ठीक है। तो इसी वजह से वो एक टैक्स हेवन कंट्री है, क्योंकि वहां पे उनको टैक्सेस कलेक्ट करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। टूरिज्म से उनकी इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है दैट makes them make them reduce their tax liabilities. Now the thing is, when you talk about tax haven nations are those nations where a tax liability over the assesses are either negligible or not at all available, ठीक है। ऐसी कंट्रीज को हम टैक्स हेवन बोलते हैं। यस सर, is there any query? ओके, टैक्स हेवंस की मैं बात कर रही थी, ठीक है। आपकी जो अरब जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ठीक है, वो भी काफी हद तक टैक्स हेवंस है, क्योंकि वहां पे जो टैक्स लायबिलिटीज हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग नेशंस, बिकॉज दे आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन देयर ऑयल प्रोड्यूसर्स फॉर सस्टेनिंग देयर इकोनॉमी, ठीक है। नाउ these tax havens can actually be exploited by multiple corporations to get the tax benefits. Now the thing is, मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड को कुछ अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराने इंडिया में यूएसए से, ठीक है। तो अब यूएसए से अगर डायरेक्टली आप इंपोर्ट कराओगे इंडिया में, ठीक है, एक तो आपको वहां पे यूएस कंट्री में टैक्स पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटीज के नाम पे, एंड जब आप इंपोर्ट कराओगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी इस तरीके से ड्राफ्टेड थी कि मॉरिशियन कंपनीज बहुत कम टैक्स पे करती थी, बहुत कम कस्टम ड्यूटी पे करती थी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज कंपनी टू इंडिया, ठीक है। तो लेट्स से यूएस में कोई कंपनी ने कुछ रॉ मटेरियल भेजना है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो डायरेक्टली ना भेज के यूएस कंपनी भेजेगी, पहले मॉरिशियस में एक शेल कंपनी बना लेंगे, ठीक है। अभी शेल कंपनीज होती है वो कंपनीज जो सिर्फ और सिर्फ पेपर्स पे ऑपरेट करती है एंड दे एक्चुअली डू नॉट हैव एक्चुअल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो वो यूएस में एस्टैब्लिश कंपनी क्या करेगी, पहले अपने रॉ मटेरियल्स को भेज देगी मॉरिशियस, ठीक है, और फिर वो इंडियन कंपनी इंपोर्ट करवाएगी यूएस से नहीं बल्कि मॉरिशियस से इंडिया में,
क्योंकि अगर वो कस्टम ड्यूटी अगर वो यूएस से आ रहे हैं ना तो हमें ज्यादा पे करनी पड़ती है, और कस्टम ड्यूटी अगर मॉरिशियन कंपनी से आ रही है तो हमें कम पे करनी पड़ती है। तो मॉरिशियस से हमारे पास जो आएगा, ठीक है, अब इन दिस साइकिल हमारे पास बहुत ज्यादा हद तक टैक्स लॉसेस हो रहे थे, ठीक है। हमारी नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन तो बढ़ रही थी विद मॉरिशियस एज अ कंट्री, बट ओवर द टाइम पीरियड हमें टैक्स लॉसेस बहुत हो रहे थे, क्योंकि लोगों ने बहुत इजीली शेल कंपनीज एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी मॉरिशियस में। Now, giving reference to this Indian-Mauritius treaty, let's say there is some company in Mauritius, ठीक है, which is an associated company, मतलब parent company इंडिया में established है और उनकी सब्सिडरी कंपनी मॉरिशस जैसी कंट्री में है जो एक टैक्स हेवन है। Now the thing is, in order to further reduce the tax liability, company established in India can transfer all its business transaction to the company's subsidiary Mauritius. Is there any disturbance? Okay. So the issue over here is that इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को फर्दर रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकती है, मॉरिशियस में कंपनी एस्टैब्लिश करके अपनी सारी ट्रांजैक्शंस उनके थ्रू रूट कर सकती है, ठीक है। अब अगर मैंने अपने भाई से कोई सामान लेना है तो ऑब्वियसली बात है कि मैं बहुत कम प्राइस में लूंगी एज कम्पेयर टू अगर मुझे मार्केट से खरीदना पड़ जाए। तो क्योंकि मेरा भाई बहन का रिश्ता है तो एसोसिएटेड कंपनीज, तो जो सिस्टर कंपनीज है, ब्रदरली कंपनीज है, वो क्या करती है, मार्केट प्राइस दे हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी। वो एक अल्टरनेट प्राइस पे ट्रांजैक्शन डील्स शो करती हैं जस्ट टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी इन अ नॉन टैक्स हेवन कंट्री, क्योंकि जहाँ टैक्स हेवन है वहां पे तो उनको टैक्सेस वैसे ही कम पे करने हैं, और जहाँ टैक्स हेवन नहीं है वहां पे वो कम प्राइसेस में शो करती है, इवेंचुअली वो लॉसेस शो करती है, ठीक है। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग व्हेन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एंटर इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शन एट अ लोअर वैल्यू देन द मार्केट वैल्यू। एक सिंपल फॉर्म में फिर दोबारा बताएं मैम, जरा सिंपलीफाई करके। सिंपलीफाइड करते हैं, लेट्स से मुझे आईफोन खरीदना है, ठीक है, मेरा भाई दुबई में बैठा है और मैं इंडिया से आईफोन ना खरीद के मैं अपने भाई को बोलती हूँ आते वक्त मेरे लिए दुबई से आईफोन ले आइए, तो मैं उसी आईफोन के लिए मैं कम पैसे खर्चूंगी या ज्यादा पैसे खर्चूंगी? तो टैक्स नहीं होगा तो कम खर्च करोगी। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंडिया में आ जाएगा एयरपोर्ट पे वो पकड़ लेंगे, वो कहेंगे लाओ इसमें टैक्स दो, इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ। वो डिक्लेयर करके लेकर आ रहे हैं, डिक्लेयर करके आप लेकर आ रहे हो एक आईफोन, वो भी विद इन द लिमिट ही है, ठीक है, वो दुबई से मेरे लिए लेकर आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लिमिट होती है जो आप विदाउट पेइंग द ड्यूटीज लेकर आ सकते हो एंटरिंग इन इंडिया। सो द थिंग इज के मैंने इंडिया से आईफोन ना खरीद के मैंने दुबई से मंगा लिया, जिसके ऊपर मुझे कस्टम ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ी, या पे भी करनी पड़ी तो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट पे करनी पड़ी, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। दिस हैपेंस बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, जहां पेरेंट्स कंपनी या सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप होता है, या वेंडर्स जानबूझ के आपकी जो रिलेटेड कंपनीज है, ठीक है, मतलब मैंने अपने भाई को बोला एक कंपनी बना दो मॉरिशस में अपने नाम से और मेरे सारे रॉ मटेरियल्स अपनी कंपनी के थ्रू इंडिया में भेजो, मुझे मॉरिशस में कम टैक्स पे करना है और इंडिया में मेरे कम कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो मॉरिशस से आ रहा है। मैम इसमें ये मॉरिशस जो कंट्री है, ऐसे कोई भी अपनी कंपनी फॉर्म कर लेगा, वहाँ की कोई रूल रेगुलेशन फॉर फॉर्मिंग कंपनी कुछ नहीं है? एक्चुअली हाँ, इंडिया और मॉरिशस ट्रीटी ये फेमस इसी वजह से है क्योंकि मॉरिशस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ही ज्यादा लीनियंट है
इट्स जस्ट अ वन डे पेपर वर्क कि आप वहाँ पे जाके अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं अगर रियल टर्म में बिजनेस करना हो? आप अपना तो बिजनेस they वहाँ will पे allow? चाहे तो कर सकते हैं, बट अगेन अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, तो ज्यादातर कंट्रीज जो ज्यादा कंपनीज जो वहाँ पे है ना वो शेल कंपनीज है। So in shell companies, these are legal companies and everything goes right there. सॉरी, जो shell companies हैं, these are legal companies operating in a legal way, permissible within the rule, but they are doing something to avoidance of the taxes, I would say. सर शेल कंपनीज सिर्फ वो कंपनीज होती हैं जो पेपर पे ऑपरेट करती हैं, ठीक है, उनकी एक्चुअल कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम शेल कंपनीज। ये ट्रांजैक्शंस को रूट करने के लिए मल्टीपल कंपनीज ड्राफ्ट की हुई है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें इंडिया में, तो हाँ पॉसिबिलिटी है, अगर हम अच्छे से स्क्रूटनाइज करें, गुड नंबर ऑफ शेल कंपनीज इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। नहीं तो इनको जैसे मॉरिशस में बहुत सारी शेल कंपनी बना रखी है लोगों ने, तो उसमें एडवांटेज क्या है मॉरिशस गवर्नमेंट को, मॉरिशस एज ए कंट्री को? उनको क्या एडवांटेज है? Why they allow these shell companies to operate? What advantage, what financial gain they that is gain what out I'm of? not aware of. Okay, why do they allow? But the thing is, the paperwork and the bureaucracy is very limited in Mauritius, and that's why it becomes very easy for you to open up a company and start up a corporation in Mauritius. Why is that ideology prominently being followed in Mauritius? That is something debatable. ना उनका फाइनेंशियल गेन क्या होता है इससे, जब वो टैक्स ही नहीं लेना है उन्होंने? तो उनका फाइनेंशियल गेन तो टैक्स डिपेंडेंट है ही ना। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में वी आर क्वाइट heavily dependent on our agricultural activities as well as taxation for generating revenue for us. बट मॉरिशस में जो उनकी डिपेंडेंसी है ना वो टूरिज्म पे है। That's why they have lower tax rates. अगर मैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की भी बात करूँ ना, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की में भी टैक्सेस जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन पीपल टू पे टैक्सेस फॉर देम, और उसके बाद उनकी इनकम जनरेट होगी गवर्नमेंट की। नहीं, दे आर जनरेटिंग इनकम बाय सेलिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑयल, क्रूड ऑयल, and that's why their dependence is very low on tax rates. तो ऐसे यूएई में भी खोल सकते हैं कंपनी कोई भी आराम से? Yes sir. यूएई में भी खोल सकते हैं आराम से कंपनी वहां जाके? नहीं, यूएई में तो अलाउड नहीं है। यूएई में एक्चुअली काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फॉरेन रेसिडेंट्स जो होते हैं ना उनको अलाउड नहीं होता कंपनी खोलना। अगर उनको अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करनी है ना, तो उनको वहीं के रेसिडेंट के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। टू नेम अ कंट्री, कतर इज वन ऑफ देम। पर जैसे वो सर दुबई का एग्जांपल दे रहे हैं, अभी दुबई ने हाल ही में अपने उसमें अमेंडमेंट किया है, चेंजेस किया है, बिजनेस सेटअप करना है तो 10 साल का गोल्डन वीजा दे रहे हैं कि नए टैलेंट को आइए हमारे यहाँ आइए, बिजनेस कीजिए, हम मिलके आपको फैसिलिटी देंगे, कंप्लायंस थोड़े कम करेंगे, आप 10 साल तक हमारी कंट्री में घूम। I have read about it, but मैंने उसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ था, तो that's why I don't want to mention it. काफी यूएई कंट्रीज अब ओपन कर रही है अपने चैनल्स फॉर अदर कंट्री, बेसिकली फॉरेन सिटीजन्स टू स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटीज ओवर देयर, ठीक है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जांपल दूं ना, कतर अभी भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है ना, तो आपको पहले किसी एक कतरी के साथ ना, जो वहीं का रेसिडेंट है, जो वहीं के सिटीजन है,
उनके साथ एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ऑन योर ओन। अदरवाइज वहां पे एज अ फॉरेन सिटीजन आप अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते। मैम 2022 में मैं गया था यूएई, फरवरी में, और वहाँ बहुत सारे एजेंट इंडिया से ही मुझे कह रहे थे कि जी हम आपको वहाँ कंपनी खोल देंगे विद इन ए डे। लेकिन जब मैं वहाँ गया और मैं एज ए स्ट्रेंजर वहाँ 2-3 दिन रुका, तो मुझे डर ये लगा कि एज ए स्ट्रेंजर मुझे कौन जानेगा, कौन मुझे बिजनेस देगा। तो इसलिए आई withdrew, I didn't take any further steps. Otherwise, there were people who were ready to help me with a nominal amount to open my company there and start operating there. Sir, I won't comment on that. बेसिकली जहाँ पे भी डिफिकल्टीज होती है ना, वहां पे आपको एजेंट्स हेल्प तो और सपोर्ट तो हमेशा मिल जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर नॉमिनल अमाउंट ऑफ फीस। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको इंडिया के अंदर ही कोई पेपर वर्क करना है या कोई लाइसेंस देना है, आप खुद जाइए, ठीक है, या आप किसी एजेंट को पैसे देके जाइए, एजेंट को पैसे दे दीजिए कि जाके लाइसेंसिंग आपके लिए लाइसेंस प्रोक्योर कर ले। इट्स जस्ट दैट डिफरेंस। अब आप यूएई जाके खुद अपनी कंपनी स्टार्ट से करना चाहते हैं, then it will become a lot difficult for you, but for the agents it will be a piece of cake, ठीक है। तो मैम मैं तो यही सोच रहा हूँ ऐसी कोई कंट्री हो जहाँ इंडिया के पॉलिटिक्स के ना हो। वहां पर इंडिया में पॉलिटिक्स इतनी है कि बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज, इतने सारे टैक्सेशन, इतने सारे चेक, कंप्लाइंसेस होते हुए भी, कंप्लाइंस होते हुए भी पीपल जो अथॉरिटी में है, दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी बिजनेस जब तक उनको पैसा ग्रीस ना करें, पान उनके ग्रीस ना करें। ट्राई नेपाल फॉर इट। नेपाल में तो और बुरी हालत है। नहीं, एक्चुअली वहाँ पे नेपाल में ना ज्यादा बिजनेस एक्टिविटीज है नहीं, ठीक है, बट वहाँ की जो टेरेन है ना वो बहुत लिमिटेड बिजनेस एक्टिविटीज को अलाउ करती है। तो इफ यू कैन गेट अ होल्ड ओवर देयर, दैट कुड बी अ सक्सेसफुल वेंचर, बिकॉज इंडिया से बॉर्डर कनेक्टेड है और इतना ज्यादा डिफिकल्टीज आती नहीं है, एज इंडिया एंड नेपाल हैव हेल्दी रिलेशंस। ओके, मूविंग फर्दर, ओके, ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद हम बात करते हैं, ठीक है, these are just definitions you need to understand. हाँ, आर्म लेंथ प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग इज अ कंसेप्ट कि जहाँ दो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस अपनी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक लोअर रेट पे शो करती हैं एज दे हैव कंपेयर्ड टू द मार्केट वैल्यू। नाउ व्हाट इज द टैक्स implicability of it, कि अगर असेसिंग ऑफिसर है, ठीक है, उनको पता चलता है द कंपनीज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर प्राइसिंग। नाउ व्हाट दे डू, दे कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है कि असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि आप अपने ही सिस्टर कंपनी को 10 लाख का सामान बेचा, हमें प्रूव करो कि आपने किसी दूसरी कंपनी को बेचा होता तो क्या वो 10 लाख में ही बेचा होता है या 12 लाख में बेचा होता है या 50 लाख में बेचा होता। सो दैट कंप्यूटेशन इज माइक ऑन है, आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible now? Am I audible now? हाँ जी मैम, हाँ जी, बट बीच में ना किसी का माइक ऑन है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है फिर। अच्छा, आई थिंक आनंद नहीं, आनंद सर की तो नहीं है। प्लीज सी, अभी तो मेरे को सिर्फ आप ही का लग रहा है, ठीक है, फाइन फाइन, ओके। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स आर्म लेंथ प्राइस। बेसिकली जब आप अपनी ही किसी सिस्टर कंपनी को कोई ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो,
ट्रांसफर प्राइसिंग ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आप अपनी सिस्टर कंपनी को 10 लाख का सामान बेच रहे हो, ठीक है। आप ये कैसे प्रूव करोगे कि आपने एक सही वैल्यू पे ही उस कंपनी को 10 लाख का सामान बेचा है? क्या पता आप मार्केट में अगर किसी अनएसोसिएटेड एंटरप्राइज को ये सामान बेच रहे होते या रॉ मटेरियल बेच रहे होते तो वो 10 लाख का नहीं 50 लाख का बेच रहे होते, ठीक है। नाउ असेसिंग ऑफिसर विल आस्क यू टू कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस। अब ये आर्म लेंथ प्राइस वो प्राइस होता है कि अगर मार्केट वैल्यू पे ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई होती तो उसकी वर्थ कितनी होती। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दैट आर्म लेंथ प्राइस देयर आर मल्टीपल मेथड्स। The first one is comparable uncontrolled price method, then is resale price method, then cost plus method, then profit split method, and transactional net margin method. In order to give you a gist about what these methods are, comparable uncontrolled price method में basically हम compare करते हैं price charged in a controlled transaction with price charged in uncontrolled transaction. So for example, अगर आपने अपनी sister company को सामान 10 लाख में बेचा है, तो अगर एक अनएसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को आपने वही रॉ मटेरियल पर यूनिट पे हम देख लेते हैं कि कितने का बेचा था, एंड देन वी कंपेयर कि क्या आपने करेक्ट प्राइसिंग पे अपनी सिस्टरहुड कंपनी को बेचा है या आपने उसको डिफ्लेट किए हैं प्राइसेस, ठीक है। Then it is a resale price method which starts with resale price to an independent party reduces normal gross margin. कि जो सामान मैंने अपने सिस्टरहुड कंपनी को 10 लाख में बेचा, अगर वो उसको आगे रीसेल करती है, ठीक है, तो कितने प्राइस पे करती है, तो उस प्राइस को हम लेके चलते हैं आर्म लेंथ प्राइस, ठीक है। देन देयर इज कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड में होता है कि आपने वो जो 10 लाख का सामान बेचा, तो ऑब्वियसली बात है आपने उसके अंदर कुछ प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया हुआ होगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट मार्जिन में अगर हटा दूं तो व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं आर्म लेंथ मार्कअप ऐड कर दूंगी। अभी आर्म लेंथ मार्कअप क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल टायर के लिए रबर सेल ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, ए लिमिटेड अपनी सब्सिडरी को रबर सप्लाई कर रही है 10 लाख रुपए में, जिसमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 8 लाख रुपए, और जो बाकी कंपनीज ऐसा करती है ना, वो करती है एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ लेट्स से 10%। तो यानी इंडस्ट्री का हम ग्रॉस मार्जिन देखते हैं, तो इंडस्ट्री का ग्रॉस मार्जिन चल रहा है 10%, ठीक है। तो 8 लाख प्लस 10% दैट इज 8,80,000। तो आपकी ट्रांजैक्शन जो आपने 10 लाख की दिखाई वो बेसिकली 8,80,000 की होनी चाहिए थी, ठीक है। तो जब 8,80,000 की होनी चाहिए थी, तो दैट अमाउंट विल बी टेकन एज आर्म लेंथ प्राइस। Then it is profit split method. Profit split method is splitting the combined profits between the associated enterprises based on the contribution. तो फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट 10 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट हुआ लेट्स से 20%, तो 20% का जो प्रॉफिट है 10% हम सब्सिडरी कंपनी में दिखाएंगे और 10% हम आपको दिखाएंगे पेरेंट कंपनी में एज एन इनकम। And finally, it is a transactional net margin method, which actually compares the net profit margin of controlled transaction to that of comparables. तो यहाँ पे हम ग्रॉस मार्जिन को ना कंपेयर करके नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर करते हैं विद द अदर ट्रांजैक्शंस हैपनिंग विद द अनएसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो जब ए लिमिटेड ने अपनी सिस्टर कंपनी को 10 लाख का सामान बेचा, जिसमें वो 2 लाख का प्रॉफिट शो कर रही है, ठीक है, तो यही 10 लाख का सामान अगर उसने दूसरी किसी कंपनी को बेचा होता तो उसमें कितना परसेंट उसने प्रॉफिट कमाया होता। तो वो जिस परसेंटेज पे अनएसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के साथ जिस परसेंटेज पे नेट प्रॉफिट गेन कर रही है, उसी को हम आर्म लेंथ प्राइस लेके चलते हैं अंडर द ट्रांसफर प्राइसिंग कंसेप्ट। इफ देयर इज एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो अराउंड दीज मेथड्स।
Ma'am, out Yes. of these all methods, which is popular method? ये cost plus method. Sorry? Sorry, ये comparable uncontrolled price method है. फर्स्ट मेथड जो है, हाँ, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज एक कंपनी की सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होती एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ, उसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है अनएसोसिएटेड कंपनीज के साथ. तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द एक्चुअल प्राइस और द मार्केट वैल्यू बेस्ड ऑन द कंट्रोल प्राइस मेथड, सॉरी कंपेरेबल प्राइस मेथड. Any further questions regarding this, or should I start with the revision part now? ठीक है मैम, स्टार्ट करें. ठीक है. I'll just take out the syllabus and one by one we'll discuss all the topics. ठीक है. सबसे पहले यूनिट 1 में हमने बेसिक लॉज के बारे में बात किया. ठीक है. बेसिक अगर मैं लॉस की बात करूं तो आता है आपको प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है. ठीक है. प्रीवियस ईयर वो असेसमेंट प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसकी इनकम को हम कंप्यूट करते हैं और जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाना होता है, उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं. देन कम्स योर असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद वाला फाइनेंशियल ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं. असेसमेंट ईयर वो ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके अंदर हम टैक्स कॉम्प्यूटेशन करते हैं. ठीक है. एंड देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ ईपी. ईपी स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. Now, immediately preceding previous year are those financial years which are preceding the relevant previous year, and that is important for you to understand the residential status of the assessee. ठीक है. तो अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो आप लोगों को जो हमने असेसमेंट ईयर पढ़ाया है वो पढ़ाया है 2024-25. तो 2024-25 में हम टैक्स कॉम्पिटिशन करेंगे. तो किसी का माइक ऑन है प्लीज. ओके. तो 2024-25 में जो मैं टैक्स कॉम्पिटिशन करूंगी फॉर द इनकम दैट इज जनरेटेड इन 2023-24. तो 23-24 हो गया मेरा प्रीवियस ईयर, और 23-24 से पहले जितने भी फाइनेंशियल ईयर्स है उनको मैं कहती हूँ ईपी, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. Those are relevant for assessing the residential status of the assessee. Now, in order to understand the residential status of the assessee, you need to understand and compute for how many days that person has been or the assessee has been resident in India. ठीक है. तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडीशंस हैं. लेट मी जस्ट ओपन इट अप. 182 डेज तक रहना चाहिए एंड 730 डेज 7 years में रहना चाहिए आउट ऑफ 10. वो वाला. There should be PPT for that. Okay, I'm missing on the PPT for that. मैं नेट पे दिखाती हूँ आपको. Okay. Okay, these are the primary conditions. ये दोनों primary conditions में से एक फुलफिल होनी चाहिए. पहली प्राइमरी कंडीशन कहती है कि जो पर्सन है वो इंडिया में मोर देन 182 डेज और मोर देन 182 डेज रहना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, या फिर इंडिया के अंदर वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर रहना चाहिए. एंड प्रायर टू 4 EPs last 4 years immediately preceding the previous year, total number of days he should be resident in India, it should be 365. Okay.
अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन द पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी एन ऑर्डिनरी एंड रेसिडेंट। ठीक है, अब रेसिडेंट डिक्लेयर हो गया, बट उसके बाद हमें चेक करना होता है कि जो इंडिविजुअल है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। बट दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सॉल्व नहीं, सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट क्लासीफाई हो जाता है। अब ये दोनों प्राइमरी कंडीशन के बाद जो दो सेकेंडरी कंडीशन हम यहाँ पे चेक करते हैं, वो ये है कि जो पर्सन है वो इंडिया के अंदर रेसिडेंट होना चाहिए 2 आउट ऑफ द पास्ट 10 years, 10 EPs, 10 immediately preceding previous years, and these set of condition comes with and, तो ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए। तो दोनों सेकंड कंडीशन इज स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 730 days in the last 7 EPs। तो ये दोनों कंडीशंस जब फुलफिल हो जाएंगी तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाता है इंडिविजुअल। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है। फॉर द कंपनीज द रूल इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि कंपनीज तो एस्टैब्लिश्ड होती है। ठीक है, for the companies the rule is based on who has the poem. Okay, who has the poem? So poem stands for place of effective management. So a company can either be declared as an Indian company based on place of effective management if it is in India during the previous year. तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो होता है जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करके की डिसीजन मेकिंग विद होल्ड करते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया रहा है तो वो इंडियन कंपनी कहलाती है, अदरवाइज वो आपकी नॉन इंडियन कंपनी क्लासिफाई होती है। Am I clear with this? The foreign company. No, not foreign company. That's what I'm coming to. अगर मैं इन कंपनीज की डेफिनेशंस की बात करूं, these definitions are listed under your income tax act। ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में दिया हुआ है ये कंपनी की डेफिनेशन। यहाँ पे या तो इंडियन कंपनी होती है या फिर डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, सारी इंडियन कंपनीज आर नॉट डोमेस्टिक कंपनीज। ओके, इंडियन कंपनी की डेफिनेशन क्या है कि इंडियन कंपनी तब है जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के अंदर है। ठीक है, बट not all Indian companies are domestic companies, but not all domestic companies are Indian companies. Certain number of foreign companies can also classify. Certain number of foreign companies can also classify them as domestic companies given they fulfill the 3 laid down conditions। यहाँ पे 3 conditions दी हुई है। अगर ये foreign company है, foreign company basically means the company which does not have place of effective management in India during the previous year, they can be classified as a domestic company if they satisfy these 3 conditions mentioned over here, 1, 2 and 3। ठीक है, moving further, why do we need to understand the residential status? Residential status जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे हमें पता चलता है टैक्स इंसिडेंस। Tax incidence, again I am not having PPT in this laptop। Okay, here it is। टैक्स इंसिडेंस क्या होता है कि कौन सी इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगेगा और कहाँ लगेगा। ठीक है, तो दिस वाज द टेबल आई वाज रेफरिंग टू इन माय प्रीवियस सेशन। हमें बेसिकली ये देखना होता है कि जो इनकम है वो इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसकी चाहे इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, वो दोनों टाइप ऑफ इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। बट अगर कोई वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है
तो सिर्फ और सिर्फ उनकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में, विद वन एक्सेप्शन, एंड दैट एक्सेप्शन इज दिस: if it is an income which accrues or arises outside India from a business controlled in India or profession set up in India, then it is taxable only in case of non-ordinary resident, but not in case of NRI. Moving further, आपके heads of income. There are 5 heads of income. Heads of income are basically the sources of income. According to Income Tax Act, what are the 5 sources of income where from which you can originate your incomes? The first one is income from salary. तो अगर आप employed person हो तो आप अपनी salary से income generate कर सकते हो, या फिर आप अपनी house property से income generate कर सकते हो. House property से rental income generate होती है. Third is profits and gains of business and profession. Fourth is capital gain. Capital gain is capital asset को बेच के जो अगर आप profit कमा रहे हो तो वहां से आपको capital gain हो सकता है. And the fifth term is income from other sources. Income from other sources is basically जो कोई भी इनकम इन चारों में से किसी भी हेड में इंक्लूड नहीं की जा सकती और वो टैक्सेबल है, तो वो हम यहाँ 5th में डाल देते हैं. For example, your interest income, your dividend received, or maybe your subletting income, or maybe your winning from horses, or your some windfall gain. ठीक है, तो वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होती है. हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम सैलरी. फॉर नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी. Just give me 2 minutes. I'll bring out the PPT. It's very necessary for this one. मैम वो पीडीएफ का लास्ट वाला क्वेश्चन है आपका, एक्स लिमिटेड वाला. नहीं, वो पीडीएफ में ना मेरे को पीपीटी चाहिए एक बार डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल तो नहीं करवा पाऊंगी, बट मैं उसकी प्रोविजंस थियोरेटिकली डिस्कस करूंगी. उस पीपीटी का नाम है आई थिंक रेजिडेंशियल स्टेटस. रेसिडेंशियल स्टेटस. राइट. आई एम जस्ट डाउनलोडिंग इट. Is it visible now? हाँ जी मैम. Okay, so this is the basic format for computing income tax. As you can see, all the 5 heads are there. ठीक है, रेसिडेंशियल स्टेटस की हमने बात की थी, एंड देन वी हैव हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड. हाँ, जो सैलरी का फॉर्मेट है वो इस तरीके से है. सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी आती है, फिर उसके अंदर हम उसके अलाउंसेस ऐड करते हैं. अलाउंसेस में हम आपके पर्क्स ऐड करते हैं. पर्क्स के बाद कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स या आपके अरियर्स या एडवांसेस होते हैं वो ऐड करते हैं. उसके बाद वी डिडक्ट योर परमिसेबल डिडक्शंस. सो बेसिक सैलरी इज फुली टैक्सेबल. उसके बाद हम अपने अलाउंसेस और डीएनएस अलाउंस is also fully taxable. Bonus, fees and commission is also fully taxable. Then हम बात करते हैं allowances. अब ये allowances क्या होते हैं? Basically to serve a particular purpose, your employer pays you, and that amount that the employer pays to you to fulfill a specific purpose is called allowance. For example, your house rent allowance, HRA. तो जो HRA होता है वो आपका employer आपको देता है to make provisions for your own accommodation. ठीक है, तो अपना खुद का रेंट पे करने के लिए या अपना घर में रहने के लिए अकोमोडेशन अपनी सर्व करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको HRA पे करता है.
Now the beauty of these allowances is that कि not the full amount is taxable. फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपए महीना देता है रेंट पे करने के लिए अपना, ठीक है, तो वो 10,000 का 10,000 पूरा टैक्सेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है ना उसमें से रेंट एक्चुअली में पे कर रहे हो। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अलाउंसेस के लिए ना हम एग्जम्पशन कैलकुलेट करते हैं। एग्जम्पशन क्या कैलकुलेट करेंगे कि हर एग्जम्पशन की अपनी कंडीशंस होती है। एचआरए की एग्जम्पशन में तब कैलकुलेट करूंगी जब मैं एक्चुअली में रेंट पे कर रही हूँ। हो सकता है मैं एम्प्लॉयर मुझे 10,000 रुपए महीना दे रहा है एचआरए के लिए, बट मैं रेंट ही नहीं पे कर रही, मैं तो खुद अपने एंसेस्ट्रल घर में रह रही हूँ। तो इन दैट केस आई कैन नॉट क्लेम एनी एग्जम्पशन, ठीक है। तो अलाउंसेस पे एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए हर अलाउंस की अपनी कुछ कंडीशंस होती है, पहले हमें वो कंडीशंस देखनी है। अगर वो एलिजिबल है कंडीशंस तो फिर हम एग्जम्पशन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पॉपुलर एग्जम्पशन की बात करूं तो दैट इज एचआरए ओनली। इसमें हम 3 अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअली में कितना पैसा हमें रिसीव हुआ, या फिर 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग वेयर डू यू रिसाइड, क्योंकि यहाँ 50% है आपका सॉरी मेट्रो सिटीज के लिए, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, ऑल क्वालिफाइज एज मेट्रो सिटी, एंड ओवर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एंड नॉट दिल्ली एनसीआर। तो अगर आप एनसीआर पार्ट ऑफ दिल्ली में रहते हैं तो वो आपके लिए 40% ऑफ सैलरी ही एप्लीकेबल है। देन थर्ड अमाउंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इन 3 अमाउंट को आप कैलकुलेट करोगे और इसमें जो लीस्ट अमाउंट निकल के आता है दैट विल बी द एग्जम्प्टेड अमाउंट। एग्जम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है इतने के अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। तो फॉर एग्जांपल एक्चुअली में आपको एचआरए रिसीव हुआ था 10,000 का, उसके बाद आपने ये 3 अमाउंट कैलकुलेट किए और एग्जम्पशन का अमाउंट, मेरी क्लास चल रही, ओके। इन 3 अमाउंट की मैंने कैलकुलेशन की, जो लीस्ट अमाउंट निकल के आ रहा है वो 8,000 का निकल के आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पशन हुई 8,000 की, अमाउंट रिसीव हुआ था 10,000, तो अमाउंट टैक्सेबल कितना हुआ 2,000। तो एचआरए के सामने हम लिखेंगे 2,000 रुपीज विच इज अ टैक्सेबल अमाउंट। Similarly, we have quite a long list of allowances over here. You can refer to this PPT and उसकी taxability exemption conditions जो है वो आपके सामने mentioned है। Again, the other popular one is children education allowance. अगर आपका employer आपको अपनी children, अपने बच्चों की education को fund करने के लिए कुछ पैसा दे रहा है, ठीक है, तो उसमें exemption आप claim कर सकते हैं up to 100 per month per child to a maximum of 2 children is exempt. Similarly, we have hostel expenditure allowance, transport allowance, and so on. After allowances, there comes your perks. Now, perks के क्या allowances से थोड़ा सा different है। perks में आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलता, बट आपके जो पर्क्स में कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं मिलता, बट आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कार दे दी आपके एम्प्लॉयर ने, आपको कार चलाने का खर्चा नहीं दिया, बट आपको कार चलाने के लिए दे दी कंपनी की तरफ से, ठीक है, या कंपनी की तरफ से आपको गेस्ट हाउस मिल गया रहने के लिए। तो द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन अलाउंस एंड पर्क इज कि अगर कोई एक स्पेसिफिक पर्पस है तो आपको दोनों नहीं मिल सकते। तो फॉर एग्जांपल एचआरए है और रेंट फ्री अकोमोडेशन है, तो एम्प्लॉयर एक टाइम पे आपको एक ही देगा ना, या तो वो आपको रेंट पे करने के लिए एचआरए देगा या फिर वो आपको घर देगा। आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? तो जो स्पेसिफिक पर्पस है उसको सर्व करने के लिए या तो आपको अलाउंस मिलेगा या तो पर्क मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकता। एंड सिंस पर्क्स आर काइंड बेनिफिट्स, तो उसमें हम एग्जम्पशन कैलकुलेट नहीं करते, हम उसमें डायरेक्टली टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।
क्योंकि अब आपके एम्प्लॉयर ने आपको घर दे दिया। अब ये एम्प्लॉयर ने अब आपको घर नहीं दिया होता और बाहर आप कहीं रेंट पे रह रहे होते सिमिलर हाउस में, तो आपको कितना रेंट पे करना पड़ जाता। ठीक है, तो उसकी वर्थ हम कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली हम टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं according to the given provisions under income tax act. So for every perk there are different provisions. So we discussed, हमने न्यूमेरिकली डिस्कस किया था ये आपके रेंट फ्री अकोमोडेशन, your motor car, medical facilities, educational facilities, and so on. Then comes your deductions. After adding your basic component, your allowances, your perks, ठीक है, there out of the total salary you draw, you can deduct these three amounts depending if you are eligible for these deductions or not. So eligibility criteria यहाँ पे दिया हुआ है आपका 50,000 है, ये सबको मिलता है, ठीक है, this is a standard deduction. Then entertainment allowance is fully taxable in case of other employees. Other employees means private sector employees. This entertainment allowance की deduction available is only and only to the government employees. Similarly, employment tax या professional tax आपने जितना भी pay किया है during the year, that gets deducted over here. Then you add on to it retirement benefits. Retirement benefits की भी हम taxable value निकालते हैं according to the given provisions. So there could be leave encashment. Leave encashment क्या होती है? Over the years of your employment, you must have accumulated a number of paid leaves. ठीक है, जो छुट्टियां आप ले सकते थे पर आपने नहीं ली, तो अब at the time of retirement or leaving the organization, what you can do, you can encash those leaves. So जो encashment हुआ उसके ऊपर हम tax exemption कैसे कैलकुलेट करते हैं? These are the rules given to you. Similarly, we have gratuity. Gratuity is a loyalty payment. So if you have served for about 5 years in an organization, only then you becomes eligible for gratuity. Also, you need to see whether you are covered under Gratuity Act 1972 or not. So if you are covered, these are the provisions that you have to calculate for computing the exemption, and if you are not covered, then these are the provisions applicable. Then pension. पेंशन अगेन आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, जिसको आप चाहो तो लमसम पेमेंट भी विड्रॉ कर सकते हो या चाहो तो उसकी मंथली पेमेंट भी बनवा सकते हो। मंथली एनुअलिटी बनाने का फायदा ये है कि आपकी रिटायरमेंट के बाद सैलरी आनी रुक जाएगी, बट एक कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ फंड्स आपको हर महीने आपके अकाउंट में आते रहेंगे फॉर योर ओन एक्सपेंडिचर्स। एंड देन देयर इज प्रोविडेंट फंड. Provident fund is the amount you get in a lump sum amount that you get at the time of retirement. ठीक है, ये चार टाइप के होते हैं: statutory provident fund, RPF recognized provident fund, unrecognized provident fund, and public provident fund. And their tax implicability is given in this particular chart. Okay. After salary, we discussed PGBP. Okay. हाँ जी, PGBP क्या कैलकुलेट करने के लिए, इनकम कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज द फॉर्मेट दैट वी गो बाय. नेट प्रॉफिट फिगर एज गिवन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से हम लेते हैं. ठीक है, द प्रॉब्लम और द चैलेंज एज यू कैन से over here, income tax authorities does not go in alignment with accounting rules and regulations and principles. Income tax authorities के अपने खुद के कुछ rules and regulations हैं which governs your expenses and incomes under the businesses. ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मेट में इनकम कैलकुलेट करते वक्त भी फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को थोड़ा साइड में रख के
थोड़ी देर के लिए भूल जाओ एंड देन मेक कैलकुलेशंस एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजंस। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट फिगर ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एंड देन वी डू एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स सेक्टर नाउ। ठीक है, नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस दैट वर डेबिटेड अर्लियर। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउड नहीं है टू डिडक्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट फिगर, हम उनको ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि आपने उनको पहले डेबिट किया हुआ है मतलब नेट प्रॉफिट फिगर में से माइनस हुआ हुआ है। तो अब उसको नलीफाई करने के लिए, उस इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। Similarly, we have admissible expenses, those were not debited earlier. तो अब उनको माइनस कर देंगे, that is our time and opportunity in the assessment year. And then we add back admissible incomes not credited earlier. Not credited earlier means जो credit side पे आपने add नहीं की थी पहले, but are allowed by the income tax authorities, आप उनको add कर देते हैं. Then there is you deduct inadmissible incomes those were credited earlier. Basically PGBP हेड जो है वो आपको ये कहता है, आपको जो मेन बिजनेस ऑपरेशंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है, those are allowed, those are admissible under income tax act. बट कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स जो डायरेक्टली आपके बिजनेस रिलेटेड नहीं है, दोज आर नॉट अलाउड टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर नेट प्रॉफिट फिगर। फॉर एग्जांपल, ठीक है, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड आप अपने नेट प्रॉफिट फिगर में अकाउंटिंग में तो माइनस कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड एज पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, तो जो आपकी नेट प्रॉफिट फिगर है, आप उसके अंदर अपना इनकम टैक्स को ऐड बैक करो। Further, I discussed two prominent sections with you. First of all, section 32, which governs your depreciation calculation. Depreciation calculation, as I said earlier also, accounting rules के according नहीं होती, तो अकाउंटिंग रूल्स को हम साइड में रख के ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड यूज करते हैं फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर पीजीबीपी। ब्लॉक ऑफ एसेट में ये लिंक है जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन एसेट आपके जो डेप्रिसिएशन रेट है वो गिवन है एज पर द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो अगर बिल्डिंग्स हैं which are mainly used for residential purposes except for hotels and boarding houses, the applicable depreciation rate is 5%. So from this chart you have to see which asset qualifies for which asset qualifies for your which depreciation rate, and accordingly you calculate depreciation rate, depreciation based on the WDV method. Only and only in case of assets which are engaged in generation and distribution of power, only those assets are allowed to be depreciated on SLM, which is straight line method. Otherwise, all other depreciation calculation will be on your WDV method. Now, there is also an additional provision for additional depreciation. So, additional depreciation provision क्या कहता है? If there is any new asset engaged in the manufacturing business in India during the previous year, so in the first year of incorporation, you can have the benefit of 20% additional depreciation. ठीक है? Along with the normal and additional depreciation, there is a clause कि अगर asset जो है आपका वो use हुआ है within the organization for less than 180 days, okay, तो ये जो rate of depreciation है will automatically be reduced to half. तो फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डेप्रिसिएशन रेट एप्लीकेबल अगर आपके ऊपर 20% है और आपने एसेट को लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया है, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ओनली एंड ओनली फॉर द 10%, एंड सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन. फर्दर वी डिस्कस सेक्शन 35. सेक्शन 35 बताता है कि अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपने R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पे कुछ खर्चे किए हैं,
तो आप उनको फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कैसे डिडक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द ऑनगोइंग R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट और द सर्विसेज, अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देन अगेन यू कैन डिडक्ट इट फ्रॉम सेक्शन 35। Then one important section that I discussed was section 44AD, that is presumptive taxation for business income. So this section is basically for the small businesses having a gross receipts or turnover of less than 2 crore. ठीक है। अब ऐसे businesses जो अपना डेली बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते इन प्रॉपर मैनर, ठीक है, तो देयर इज प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44AD कि हम गवर्नमेंट सीबीडीटी बेसिकली मान लेगी कि आपका ड्यूरिंग द ईयर जितना भी टर्नओवर हुआ है उसकी 8% जो है वो आपकी बिजनेस इनकम है, और जो इस 8% है बिजनेस इनकम उसके ऊपर वो टैक्स लगाए। एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, I'll end up this session here and we'll resume with the revision class at 2 o'clock. Or shall we start earlier? मैम ब्रेक ले लेते हैं, मैम ब्रेक ले लेते हैं। हाँ ब्रेक ले लेते हैं, बट कितनी देर का? 2 o'clock, इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock now, ठीक है, तो 1:30 पे स्टार्ट करना है नेक्स्ट सेशन है 2 o'clock। मैम 2:45 या 2 के तक बीच में रख लेते हैं। Sorry, 2 o'clock. 2 o'clock, fine. जी, So fine, we'll resume the session at 2 o'clock again. Okay. thank you. Okay. सीता हाँ मैंने टेक्स्ट किया है। अच्छा, एक सेकंड रुको। सीता हाँ, तो ये कौन से लिंक से डाउनलोड कर रहा है जो फोन में नहीं हो रहा? पता नहीं क्या, मतलब मेरे पास 2 फोन है, 2 डिवाइस है, एक से जा रहा था, एक से नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ। क्लास रिकॉर्डिंग में मैं व्हाट्सएप पे बोल रही हूँ।
Am I audible now? हाँ जी मैम। Okay. Let me know when my screen is visible. Is the screen visible now? हाँ जी मैम। Okay, fine. Next head is your capital gains. ठीक है, capital gains को address करने के लिए the format that we use is this. Okay, these are the three formats depending on what type of asset that you are selling out. Now, first of all, capital gain arises only and only when you sell a capital asset during the previous year. For that, you need to understand what is a capital asset. That you need to understand what is a capital asset. Okay, not every asset that you own qualifies as a capital asset. Okay, so we do have a definition of capital asset over here. So listed securities, equity, preference debentures, common securities, UTI units, equity oriented mutual funds, zero coupon bonds, unlisted equity and preference shares, land and building. All these qualifies as capital asset along with certain personal assets. For example, your jewelry, costly stones, ornaments made out of silver, gold, platinum, other precious metals, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, and any other work of art. These are also qualified as capital assets. Now, these capital assets could be of two types. One is short-term capital asset and the other one is long-term capital asset. It depends on how long you have holded up to that asset and then sold it off. Okay, so if we talk about listed securities, you hold those listed securities for about let's say 11 months and then you sell it off. So if it is within the threshold limit of 12 months, then it qualifies as short-term capital assets. Otherwise, if you hold the listed securities for about let's say 18 months, it crosses the threshold limits of 12 months and then it will qualify as long-term capital asset. The difference between short-term and long-term capital asset is that the benefit of indexation is not available in case of short-term capital asset. As you can see in the format also, the indexation is not available. It's directly the cost of acquisition of asset. But in case of long-term capital asset, the benefit of indexation is available only up to the assessment year 2024-25, and beyond that there are certain other assets which also, even though they are of long-term nature, even then they do not call for the benefit of indexation. And the third category of asset is depreciable assets. If these are used for the businesses and profession and you hold depreciable assets, then you calculate the WDV. WDV stands for written down value of the block of asset. You add actual cost of assets falling within that block acquired during the year. Deduct full value of consideration of assets transferred or sold during the year, and expenditure incurred on transfer of the asset, whatever amount is left. If it is a positive amount, then it qualifies as capital gain. If it is a negative amount, then it will be called as capital loss. And the tax liability occurs only and only in case there is a capital gain. There is no tax liability in case of capital loss. Further, this is basically the formula for calculating the indexed cost of acquisition. You take cost of acquisition, the purchase price of the asset, multiply it with the CIE for the year of transfer, which is 348 in our case, divided by CII of the year in which the asset was acquired, or the financial year 2001 or 2, whichever is later.
So let's say if you have acquired a capital asset somewhere in 1990, okay, the problem with our CII numbers is that we do not have CII numbers for 2000 period prior to 2001 and 2. So over that condition, what do? We take the market value of the capital asset as on 1st April 2001 and 2, and then divided by a CII of the year for the financial CII of the 2001 and 2. I have already shared this CII table, and this will all this should be provided to you during the examination. So in this table, you don't have to see the assessment year, okay? You have to see the financial year. Yes, sir. अगर ये टेबल एग्जामिनेशन में नहीं मिली तो ये कैरी कर सकते हैं? आप कैरी कर सकते हैं, provided nothing else is written on this table. So no, there should be no imprint in form of pencil or pen. Right? हाँ वो तो हो, yes. Just make sure it's a very clear copy of the table so you can carry it for your examination. Now over here, you have to see the CII number according to the financial year in which the asset is sold and not according to the assessment year, okay? Because the transaction of selling the capital asset happened in the financial year. So according to the financial year, we see the CII number. So 2023-24 के लिए CII number is 348, which is for our current previous year. Now, there are certain exemptions that you can avail from your capital gain. Now, those exemptions are basically in the nature that you might have sold a particular capital asset in anticipation of buying a new capital asset. So, for example, आपके पास दो घर थे, आपने दो में से एक घर बेच दिया और उसके और जो उसके प्रोसीड्स आपके पास आए, जो आपने घर बेचा, ठीक है, उससे आपने एक नया घर खरीद लिया. So basically what you have done, you have reinvested the capital gain. So over there, in such situation, when you have reinvested into a new capital asset, you can claim for exemption over the capital gain tax, depending upon what asset that you have transferred and in which asset you have reinvested. These are the different sections you have to refer to. So for example, if I talk about section 54, this is applicable only in case of individual and half. So over here, you have to see the asset transferred must be a long-term capital asset, and it should be a residential house property, and you must reinvest in buying a new house property which is residential in nature. Okay, so section 54 कहता है आप एक घर को बेच के दूसरा घर खरीद सकते हो. तो जब आपने एक घर को बेच के दूसरा घर खरीदा, तो जो पैसा आपने रीइन्वेस्ट किया वो, या फिर द मैक्सिमम ऑफ कैपिटल गेन आउट ऑफ द टू अमाउंट्स, जो पैसा आपने रीइन्वेस्ट किया वो, या फिर जितना आपको कैपिटल गेन हुआ, whichever is out of these two amounts, whichever is lower, you can claim it as exemption from paying the capital gain tax. Similarly, we have other sections. Another section which is of special interest is section 54F. Over here, you let's say you have assets in the name of gold, silver, some other jewelries, bonds, that you have sold it out in order to purchase a new residential property. ठीक है, तो हो सकता है किसी का घर ना हो और नया घर खरीदने के लिए वो अपनी ज्वेलरी और अपने बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं. ठीक है, तो इस टाइप की रीइन्वेस्टमेंट को क्वालिफाइज करती है अंडर सेक्शन 54, and over there you can calculate the amount of exemption using this formula, which is LTCG, capital gain amount, multiplied by amount invested divided by net sale consideration. So whatever amount is computed out here, you can claim that amount as exemption under section 54F. Moving further, let me just go back to the syllabus for all topics that we have discussed so far. Okay, corporate tax and set off and carry forward and set off of losses.
income tax theory. So you can skip this part if I send this to you, origin of tax system in India. This is actually from UG syllabus, so you can skip into Kautalia's taxation system as well. You can directly jump onto this table, which tells you about the provisions of set off and carry forward of losses. So basically what happens if you have like income from multiple sources, let's say. Have I done any numerical over it? Let's say. Okay. Over here. These are the 5 heads of income. Okay. Let's say from salary, you generate 1 lakh of income, taxable income. From capital gain, you generate 5 lakhs of capital income. Okay. The gross total income becomes 6 lakh rupees. Now let's say under PGBP, there is a loss of 8 lakh rupees. Okay. So basically, you have a gross taxable income of minus 2 lakh. That means over and all, you have minus 2 lakh of gross taxable income. But we need to see it first that does set off and carry forward of provisions allow this amount to be minus 2 lakh or not. Okay, how do we see it? We see there's a PGBP income of minus 8 lakh rupees. We'll go back to the rules over here. We'll refer to the provisions which relate to the PGBP, and that is, let's say, loss from normal businesses. So can loss from normal businesses be set off against any income or not? That is written in the 3rd column. So the provisions of section 72 basically says in any loss that arises from a normal business can be set off only and only against from income from such businesses. That means you cannot set off the loss of 8 lakh rupees from the income of salary or from the capital gain of 2 lakh rupees, which or the capital gain of 5 lakh rupees over here. So over here, the gross taxable income will not be minus 2 lakh, rather it will be 3 lakh rupees. Are you with me on this? Okay. Now what will happen to the 8 lakh loss, 8 lakh rupees of loss? Now this 8 lakh rupees of loss, since it cannot be set off. Okay, the terminology that I'm using over here is a set off. Okay, so you set off the losses within the same previous year, but if you cannot set off the losses in the same previous year, you carry forward it to the next previous year. Okay, so the term set off relates to the current previous year, and carry forward refer to the future previous year from which you can actually deduct this losses. Now this 8 lakh will be carry forward to the next year, and next year, let's say there's a PGBP income of 10 lakh rupees. Okay, so over there, this PGBP income from which you can set off this 8 lakh loss will become 2 lakh rupees. And this process of carry forward, you can continue it for the 8 years. This is in continuation. Okay, so continuing from the year of occurrence of the losses, you count 8 years. Until then, you can carry forward the losses up to 8 years. And whether do you need to file any mandatory return for the year in which loss occurred? The answer is yes. So this table refers to the different provisions laid under different sections, whether you can carry forward the losses to the subsequent heads, set off the losses from the subsequent heads, or you can carry forward it to the next years or not. Okay. Again, you can skip this part. Clubbing of income is not according to your curriculum. This is again for UG students. Okay. Next topic that we need to discuss. Okay. It is of
computation of MAT provisions and PGBP income. Now, if we talk about corporate tax, you can pay corporate taxes according to these slab rates, depending upon whether you fulfill the eligibility criteria of the given section or not. So there are basically three sections for you of particular interest. This first one is section 115BA. The eligibility criteria is mentioned in slide number 23 over here. This is the eligibility criteria. So if you have a domestic company that is engaged in the business of either manufacturing or research or distribution of a product, and the business has begun on or after 1st April 2017, and you exercise the option by filling in Form 10IB and you're filing returns for the very first time, then you can avail the benefits of Section 115BA, and that benefit is that you can pay a lower tax rate of 22% given you do not take the benefit of these mentioned deductions. So from Section 10A to up till 10A and then Section 32. Section 32 belongs to your depreciation. Section 35 that we have discussed earlier today in today's session. Section 35 belongs to your contribution towards R&D. Okay? And then Section 80JJA. So basically over here you can take benefit of Section 80JJA that concerns with the expenditure on hiring of new employees. Okay, so if these conditions mentioned in, under Section 115BA are fulfilled, you can pay a lower tax rate of 22%, lower than 25%, which is actually provided under the normal provisions, and 30% for the companies which have the gross turnover of more than 400 crore rupees. Again, you have to check out whether you fulfill the eligibility criteria of Section 115BA and Section 115BAB 2. These are provided under slide 24 and 25-26. If you fulfill the criteria, again, you have the option of paying lower tax rate of 22% and 15% respectively. Again, then over here, there's a straight surcharge rate. It does not depend upon how much income that you generate. You have to pay the surcharge. So surcharge rate is flat at 10%. But as you can see, under the normal provision, the surcharge rate is not flat. It depends upon the income. So if you hold the income, taxable income of more than 1 crore, but less than 10 crore, you have to pay a surcharge of 7%. And above the income of 10 crore, which is taxable income, you have to pay a surcharge of 12%. Then again, whether or not marginal relief is available to you, this provision of marginal relief is only and only available under the normal provision, and it is calculated as the amount that you have computed under surcharge or income above 1 crore minus income tax on income above 1 crore, whichever is less. So basically there you have to compute these two amounts, and whichever is lower, you take it as marginal relief, you deduct it from your tax liability, and then finally you can go ahead and then compute health and education cess, which is 4% in any provision you file the income taxes in. Now, additional to this, there is minimum alternate tax, which is popularly known as MAT tax. MAT tax is applicable at the rate of 15%, but on the book profit. Okay, so the net profit that we calculated, that I talked about calculating earlier, is a little different from book profit. We arrive at the figure of book profit from net profit after making 16 adjustments to it, and those adjustments are listed over here. Okay, MAT provisions are listed under Section 115JB. Okay,
So these are the 8 additions. If these incomes arrive, if these expenditures arrive in your P&L, you have to add it back to your net profit figure. And these are the amounts that you have to delete from your net profit figure. So deleting the net profit figures means you have to subtract it from the net profit figure. Ultimately, the amount you arrive at is known as your book profit. Now you have to make the calculations according to the normal provisions as well as MAT profits. So 25% is the tax rate over the normal, under the normal provision, you calculate it, and 15% you calculate it over the book profit. Now you have to assess out of these two amounts, whichever is higher. Okay, that amount you have to pay to the income tax authorities as a tax liability. For example, let's say under the normal provision, you calculated the tax amount to be as like 5 lakh rupees, but under the MAT provisions, the amount of tax that is computed out, let's say it is 6 lakh rupees. Although your tax liability is generated out to be 5 lakh, but still you will have to pay a tax liability of 6 lakh rupees because MAT provisions, which stands for minimum alternative tax, says this is the minimum amount of tax that you have to pay to the government. Now it might seem like an unfair situation to you that why are we paying a higher amount under the tax liability even if my tax liability comes out to be 5 lakh rupees. Now the thing is, you have to pay a minimum alternative tax of 6 lakh rupees during the previous year, but you can avail the benefit of tax credit of rupees 1 lakh, which is actually the difference between the tax liability and computed under the normal provision and the tax liability computed under the MAT provision. So the difference over here, you can avail it as a tax credit for the subsequent years in which you can, in which your normal provisions, in which your tax computed under normal provision is higher than your MAT. Okay, so this is basically, you can treat it as an advance payment of tax because government asks you to pay a minimum amount of tax during a particular year. Along with it, we have special tax rates for capital gain, depending on whether you pay STT. STT is basically securities transaction tax. So if there are equity shares, short-term equity shares over which you have generated capital gain and which also attracts STT, STT stands for security transaction tax, then the short-term capital gain tax rate applicable over your income is 15%. Similarly, there is LTCG, which is governed under section 112. Tax rate is 20% and so on. And there is some other type of incomes, which is winnings from lotteries, crossword, puzzles, races. This attracts a heavy amount of tax rate, which is 30% directly. So for example, you go to KBC and you win 1 crore rupees, even then you will get only 70 lakh rupees in hand. They will deduct a 30% TDS over your amount that you won over there, and you will get the balance of 70 lakh rupees in your hands. Any questions, queries so far? मैम, Yes, sir. ये इतने सारे सेक्शन हैं, इतने सारे प्रोविजंस हैं और एग्जाम अभी नजदीक है, पढ़ना पड़ेगा सर। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देयर आर मोर सब्जेक्ट्स। ये तो आपका अभी शुरू हुआ है इनकम टैक्स, तो अब मैं तो सोच रहा हूँ इसको ड्रॉप कर दूं, इसके अलावा जो रेगुलर है वही कंटिन्यू कर लूं। बहुत मुश्किल हो रहा है ये इनकम टैक्स को लेकर, इतने सारे हर लाइन पे तो प्रोविजन है। Taxation is a difficult subject, sir. Taxation upholds a different kind of profession in itself. Right. तो जो हम बात करते हैं ना CA, CS लोग करते हैं, तो एक अलग ही लेवल है उनका, बहुत complex system है, I understand that, but you are again, I'm repeating this thing again, this is still a very like
only 10% of what actual taxation system is. What we are studying is only about 10% of what actual taxation system is in India. It is so complex, you mean? तो मैम अभी टाइम नहीं है, आई थिंक अब टाइम नहीं है क्योंकि 2 जून से तो एग्जाम शुरू हो रहे हैं. Have you all filled up your examination forms? I will fill up. Tomorrow is the last date. So I was just thinking to drop this paper or to continue with this paper. So dilemma I am here in this moment. What should I do with the corporate tax paper? Should I continue with it or should I drop it? Because I don't have first the commerce background, and then time is so limited now. If I start reading this corporate tax, entire remaining time, whatever I am left with, will be, I think, utilized in corporate tax preparation only. So I am finding it a little difficult, and you said it is a 10% of the actual taxation law. So still more, and I will not be able to file the income tax return my own. I will have to take some professional. Obviously, you will have to take the professional help. This only gives you a basic understanding for running your business operations. Obviously, I do not expect all of you to file taxes on your own for your businesses. But this definitely gives you a basic understanding if that no fraud is being committed with you. And you can actually make certain business decisions based on your understanding of taxation. For example, whether to start or register business in a SEZ zone or a free trade zone or not. Okay. So that was the issue coming into my mind. What should I do with this corporate tax paper now at this stage? That you have to decide on your own, sir. That I can comment upon. If you understand even 50% of the subject, then I think you should go ahead with it. And otherwise, if you have the option, because I don't think that you have attended classes of other subjects. I attended. There is one more subject, this financial reporting. We don't have the regular class for that too. So I was just thinking to switch over that paper to this corporate tax. But corporate tax itself is I'm finding more this heavy paper. It will take more time to understand. Any other query related to the syllabus so far? Chalo, I'll move. TDS. Yes. Sir? TDS में पूरे सेक्शन लिखने लर्न करने पड़ेंगे. That something is an important one. TDS में आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है PGBP की. मैं आपको बता देती हूँ. अगेन यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. TDS में TDS related to your interest. Okay. And TDS over the salary. Commission also. Sorry. Commission. Commission. I think interest, salary, commission. I'll just bring out the list. Okay. Wait for a second. Okay. So this is a particular list over here. So TDS over salary, commissions, interest on securities. Okay, insurance commission you also have to do. Then interest on other than interest on securities, online gaming and winning from games. So you don't have to cover sale of house because we have house property was not a part of your curriculum. So you can skip sale of house, insurance commission you can skip, rent payment you can skip, professional fees you can skip. Right?
Yes, ma'am. I'll give you 2 minutes to make a note of it. Okay, ma'am. I'll repeat again. Salary, commission payments, interest on securities, interest other than interest on securities, online gaming, and winning from games lottery, betting, gambling, crossword puzzle, card, etc. तो मैम मतलब ये जो विनिंग फ्रॉम गेमिंग एंड लॉटरी है जिसमें वो ग्रॉस दे रखा होता है और नेट करना होता है, राइट या राइट नेट दे राइट। रखा होता है न्यूमेरिकल, ग्रॉस हाँ, करना इसका होता है। न्यूमेरिकल भी मैंने करवाया था क्लास में। हाँ वही पूछा मैंने इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, वही है। इसमें 30% अमाउंट डिडक्ट करना होता है। हाँ और 30/70 और जो अमाउंट गिवन होता है उससे मल्टीप्लाई कर देता है। राइट राइट राइट। Okay, fine. Moving further. Okay. Next, moving further. Yes. आपकी ये पीपीटी में ये जो क्वेश्चन था ये पोएम वाला और एक बिजनेस पैसिव इनकम, उसमें क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन एग्जांपल। एक सेकेंड, which one? This one? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। ये मतलब ये डिस्कस नहीं हुआ, ये इसी प्रोविजन पे बेसिस है या मैट वाले पे या किसी और? This you can skip. This is not a part of your curriculum. Again, as I said, these PPTs are made according to the UG syllabus, na? So the part that I have not discussed, you can easily skip that. That means this is not relevant to your curriculum. जो कंपनी का स्टेटस पूछ रहा है तो आई थिंक वो पोएम के हिसाब से, तो इसलिए पूछा मैंने। नहीं, पोएम के अकॉर्डिंग है, लेकिन पोएम की ना कुछ पर्टिकुलरली प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन आइडिया। हाँ, सो इफ यू सी दिस थियोरेटिकल की पोएम हम कैसे डिड्यूस करते हैं, तो देयर इज 30% इनकम क्राइटेरिया you should fulfill, ठीक है। 30% is your asset criteria. So again, those are, since those are not a part of your curriculum, I have not discussed it. ओके। एंड मैम इसमें कोई केस लॉ याद रखने की तो जरूरत नहीं है मैट के केस में? मैट केस में केस स्टडी मैंने करवाई थी आप लोगों के साथ, न्यूमेरिकल, फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल था। You must have that. थ्योरेटिकली केस लॉ याद रखने की तो जरूरत नहीं है ना, आई एम आस्किंग। इसका क्या नहीं करना? थ्योरेटिकली कोई केस लॉ याद करने की तो जरूरत नहीं है ना? ना, थियोरेटिकली केस लॉ करने की जरूरत नहीं है आपको। इट्स जस्ट दैट के मैट के प्रोविजंस में 16 एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द न्यूमेरिकल दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस ऑनलाइन सेशंस। इसका पूरा केस स्टडी अलोंग विद द सॉल्यूशन आई हैव ऑलरेडी पास्ड इट ऑन टू यू। हाँ जी। ठीक है सर। तो मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस दोज आर थियोरेटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली रेलेवेंट टू यू। आई हैव कवर्ड इट ऑल इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। Okay, moving further, we have the concept of tax planning, tax management, as well as tax avoidance and evasion. Now, from examination point of view, these are very relevant 4 topics that you need to consider. Okay, so if we talk about tax planning, it is about thinking about how you are going to save money on paying taxes. Okay, so if I talk about a lot of deductions that we have discussed, you may take benefit of certain deductions and then you start
investing into those deductions, so that when it comes for the time for claiming the deductions, you can claim it rightly. So using deductions and exemptions in order to reduce the tax liability to minimum. This is the concept called tax planning. Now, in order to attain this tax planning objective, you might have to go through the process of tax management, which is actually doing the paperwork in order to comply with the different provisions of the law. So, for example, if you are claiming exemption under HRA, you must have rent receipt with you. You must pay your rent in any digital mode to your house owner, whether through NEFT, IMPS, or now UPI payments are also valid. Okay. When we talk about tax avoidance and evasion, tax evasion is completely illegal, and tax avoidance is basically using the loopholes into the system for reducing the tax liability to the minimum. Over here, one case that is of very importance, very significant in nature, is of Vodafone Hutchison case study that we have discussed in previous classes. That is a classic case of tax avoidance, and how those tax avoidance loopholes helps assess the CBDT authorities to revisit their laws and reframe their laws according to that. Then we talk about tax planning with reference to setting up a new business. Now, you can do the tax planning in reference to a new business depending on the nature of the business or the location of the business. So, if we talk about the location of the business, here the concept of SEC of utmost importance to you. SECs are special economic zones. These are basically underdeveloped areas in which the government, where the government wants to promote infrastructure development. So what do they do? What does this government do? They assign the status of special economic zones to such areas, so that the industrial industries are attracted towards establishing their factories, their offices in those areas, which helps upliftment of the area. Infrastructure wise, also they provide employment to the nearby people, the people residing in the nearby areas, and they also help in the development of that area by providing logistic services and the transportation services over there. Now, if you establish your industry in such special economic zone as the owner of the business, you get a lot of tax benefits. So the tax benefits can extend up to the 10 initial years of the business, depending upon what is that kind of business that you are setting it up, and if whether or not you fulfill the conditions given under the different sections. So, for example, if I talk about section 10AA, it is for the newly established unit in SCZ. So, for the very first 5 years, there is 100% exemption. That means no taxation for the first 5 years of the business. For the next 5 years, again, 50% of the tax liability is reduced, and for the next 5 years, it can again you can extend the benefits to the further 5 years by filing certain documents, a list of documents with the government authorities, CBDT. You can extend those benefits. If we talk about newly set up industrial undertaking, industrially backward state or district, you can take benefit given under section 80 IB. For the newly set up industrial undertaking, substantial expansion of existing undertaking in certain special category states, you can take benefits of deduction under section 80 IC. And for the northeastern state, if you are establishing undertaking in a northeastern state, you can take benefits under section 80 IE. Over here. Then, if we talk about nature of business, there are many benefits attached to certain types of businesses if you carry out it in India. For example, the business of tea, coffee, rubber development. Okay, this case we have discussed numerically as well.
If you are in the business of shipping or the business of flying, hiring, leasing goods or carriages. Further, if you are into telecommunication business, these are the listed sections under which you can take benefit out of it. Okay. Further, you can skip this part, form of business again, since it is also not a part of your curriculum. So you can easily skip the part where we talk about forms of business. Further, another question that comes into the mind of business owners or board of directors, whether or not to pay dividends. Okay, again, I'm repeating myself that dividend that we talk about from accounting perspective is quite different from the definition of dividend that we address to under the Income Tax Act Income Tax Act. Okay, so the company might say that the amount of profit that we distribute out of our net profit constitute the dividend for its shareholders. But the definition of dividend is quite different when it comes to Income Tax Act. So there are 5 types of definition. So basically 5 kinds of dividends that a company might pay and over which the tax liability occurs from the shareholders' point of view. So prior to 2017, this tax liability was the responsibility of the companies to pay in the form of dividend distribution tax. But after 2017, the laws were amended and the dividend is now taxable in the hands of the shareholders. So if there's any distribution of assets in form of cash or fines, that also constitutes dividend for the shareholders. Any distribution of debentures, bonus shares to the shareholders, that is also dividend. Distribution of assets in the event of liquidation or the winding up of the company, and the reduction of the share capital or the loans and advances held by the closely held companies. Now, these 5 types of dividends qualifies as dividend under Income Tax Act. Is there any queries so far? Rakesh sir, your mic is on. Oh, I'm sorry. Trying to say something? Okay, fine. Okay, it's okay. Okay, moving further. Yes. मैम Yes. बोनस शेयर का ट्रीटमेंट एज पर कैपिटल गेन होगा या उसको अदर सोर्स में कंप्यूट करेंगे? No, sir. बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आपकी कंपनी आपको एलोकेट करती है फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो सिंस इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो इनकम okay is generated in the hands of shareholder until and unless those bonus shares are sold off in the market. Are you getting this thing? हाँ जी मैम. ठीक है, तो जब तक वो बोनस शेयर सेल ऑफ नहीं होंगे तो कोई इनकम जनरेट नहीं होगी शेयर होल्डर्स के हैंड में. तो इसीलिए और जब शेयर होल्डर्स के हैंड में इनकम जनरेट होगी एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ द शेयर्स, बोनस शेयर्स, ओके, तो सिर्फ कैपिटल गेन जनरेट होगा. सो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड ओनली द कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीकेबिलिटी ओवर द बोनस शेयर्स. मैम पहले के प्रोविजन में सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 में इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर वो 10 लाख रुपीस एग्जेम्प्ट था, तो ये प्रोविजन अब भी है या चेंज हो गया है? प्रोविजन एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ बोनस शेयर्स. हाँ जी. एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ बोनस शेयर्स आपके पास कोई टैक्स इम्प्लीकेबिलिटी नहीं है अभी करंटली. तो मतलब सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 जो 10 लाख वाला एग्जम्पशन था वो अभी भी है? मैं एक बार सेक्शन दोबारा रेफर कर 4 of the Income Tax Act. This is the section you are referring to? हाँ जी, हाँ जी.
Okay, so again, this refers to the dividend income over which DDT is applicable. डिविडेंड Okay, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो अब अबॉलिश हो गया, अब हाँ तो जी। डायरेक्टली शेयर होल्डर्स पे करते हैं डीडीटी के ऊपर, और सॉरी डीडीटी कह रही हूँ, डिविडेंड इनकम के ऊपर अब तो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स पे करते हैं ना टैक्स। हाँ जी। ठीक है, तो डिविडेंड बोनस शेयर अगर आपको मिला है तो आप बता सकते हैं कि बोनस शेयर कितने का मिला है आपको? नहीं। क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी, हाँ जी, Are we getting this? हाँ जी। तो बोनस शेयर के ऊपर टैक्स एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब आप बोनस शेयर्स को सेल ऑफ करेंगे, और जब बोनस शेयर्स को आप सेल ऑफ करेंगे तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, गिवन कि हाँ जी। आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन हो रहा है। वैसे तो कैपिटल गेन ही होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जीरो है उसकी। हाँ, तो Exactly. वो जो आंसर में निकलेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फाइनल आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है कि आपने बोनस शेयर्स 1 ईयर के बियॉन्ड रखा हो तो वो तो लॉन्ग टर्म शेयर कैपिटल गेन बन जाएगा। तो बोनस शेयर पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज जीरो, उसका आप इंडेक्सेशन क्या करोगे? हाँ। लॉजिकली जब जीरो ही है आप इंडेक्सेशन लगाओगे भी जीरो के ऊपर तो जीरो ही तो आएगा। हाँ, नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ओके, further let's see what all topics are left to be revised. तो यूनिट 4 तो हमने आज मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर ली थी, तो वी डोंट हैव टू रिवाइज यूनिट 4 और सॉरी यूनिट 6 एंड हाँ, स्पेसिफिक मैनेजमेंट डिसीजन मेक और बाय सेल एंड रिपेयर। अगेन if we talk about operative decisions, ठीक है, there could be a number of operative decisions that an organization might have to take. मैंने एक numerically करके भी दिखाया था आपको। I have this question for the lease rent last class में। ओके हाँ, ऑपरेटिव डिसीजंस की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका फर्स्ट डिसीजन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर का, whether you should fund your requirements from debt or equity. Now if we talk about certainly from tax perspective, so interest, since it is a tax deductible expense, so having a tax interest component into your debt structure is always helpful for you to reduce the tax liability. So again, we saw this doing a numerical over here where we had 3 choices. The first choice had complete equity structure, the other one had equity along with debt structure, but where equity was more as compared to the debt, and the third one, a third choice where equity was way lesser than the debt component. So the idea is to calculate ROE. ROE is return over equity. So we calculate return over equity by subtracting interest from the EBIT. Then we subtract tax given surcharge and education cess. We subtracted, then whatever amount of tax is paid, we deduct it from EBT and we get the PAT amount, which is profit after tax. Then profit after tax divided by the amount of equity. That's how we get the ROE, return over equity. This is in the percentage form, and as we can see, the more this debt structure is available, debt component is available in my debt structure, higher the ROE is for me. Since more debt calls for more interest amount, that means more saving on the tax point of view,
and hence a lot of money is left over for my equity holders. Similarly, we discussed the of bonus shares over here. We have already discussed it. I do not have that file in which I have discussed make or buy, but let me just see. SLM में देखते एक बार. SLM. Hmm. 29. Okay, so this was the numerical that we discussed in our previous classes to understand whether we should go ahead and purchase the asset on its own or whether we should hire that asset on a lease rental. Okay, so the idea of this is we have to see the tax liability involved under both the alternatives, and we see where the tax liability is minimum, and hence we take the decision accordingly. While doing this numerical, we came to the conclusion there's hardly any difference between the two. Over here, you can see it's 75,661. Although this numerical is wrong over here, the computations are wrong. But again, then when we did the calculation, even then the difference between the two alternatives was hardly 1,200 rupees. Now the idea is even if there's a difference of 1 penny only, you will go ahead with the theoretical decision based on where the tax liability is minimum, and that will be our decision from the examination point of view. But from the real life perspective, the difference of 1,200, 3,000 doesn't really make sense. So over there, you do these calculations and then you, along with your own wisdom, ascertain whether under which alternative you should go. Okay, so the numerical goes like this. The first alternative is buying the asset on a loan of 20,000 rupees EMI. So every year you have to pay out a 20,000 rupees EMI along with a 14% interest that we calculated. The total cash outflow is 20,000 loan payment plus interest. Over then you calculate the depreciation. Since you are owning the asset in your own name, you are eligible for taking out depreciation on that asset. So assuming that there's a 25% block of asset applicable over here, you calculate the depreciation. You do the sum of cash outflow, interest plus depreciation, since interest and depreciation both are tax deductible items. Take a sum of it, you calculate the tax savings, you calculate the adjusted cash outflow, which is basically the net cash outflow, which is cash outflow cash outflow minus the tax saving. Then you calculate the present value of adjusted cash flow by multiplying it with the present value factor. Again, for your own reference, these present value factors values are not correct over here. You have to refer it from your financial management book. Then you do the sum of the present value of adjusted cash flow and you get the final figure. Similarly, for the second alternative, there was a lease rental of 30,000 rupees every year along with an initial investment of 1,000 rupees in the first year. You calculate the cash outflow, you do the tax saving calculations, you calculate the adjusted cash outflow by cash outflow minus tax saving. Then you multiply it with the present value factor in order to get the present value of adjusted cash outflow.
the sum of it, then you compare the sum of present value of cash outflow, both the alternatives, and then you make the decisions accordingly. And based on the similar numericals, you have to make decision whether you should go for hire purchase or installment purchase decision. Again, interest is tax deductible, and which is a component available under this option also. Further, we talked about amalgamation, demerger, and slum sale in our previous class. Okay, there are three different. Sorry to interrupt. Same procedure, process और manufacturing वाले question में भी होगा. Yes, you just have to identify what are the tax deductible items given under the question. Okay. So basically, the first step is to calculate the total cash outflow, whether it is in terms of hire purchase amount, whether it is in terms of EMIs, whether it is in terms of installment amounts. Okay. Okay. अगर क्वेश्चन में गिवन होगा जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट दे रखे हैं, सेल्स प्राइस, कंट्रीब्यूशन एंड ईवीआईटी से फिर क्वेश्चन चालू हो जाएगा. राइट, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के केस में. ओके ओके, ठीक है. राइट, so in decisions like make or buy, replace or repair, you have to compute two types of amount. The first is cash outflow, how much amount I'm spending year on year. Secondly, the tax savings that I'm doing year on year because of the tax deductible expenses involved in the question. Now, in the question where the question asks you about the decision, about making a decision between make or buy. So when there's a making, you might have taken a loan and you might have paid a interest. So interest is a component which is a tax deductible, and since you are making it on your own, okay, that means you and in the second alternative, when you are owning the machinery yourself, you can also have depreciation as a tax deductible item. So all these numericals are of same nature. You have to just identify the cash outflow and tax savings based on the tax deductible items available in the question. And then you multiply it with present value factor in order to get the present value of the adjusted cash outflow. Right? And final topic for us to discuss is your amalgamation, demerger, and slum sale. These are the three types of business reorganization. Okay, and how do we deal about it under the taxation? This is what we have done in the last class. Okay, if I remember right. So amalgamation is basically when there are two or more companies amalgamating into one company. So the existence of the previous companies moves out of the tax liabilities, and only the new company remains left over, and the tax implications are on the new company. Now, what are the tax implications in case of amalgamation? So for there is a list of eligibility criteria. If you fulfill that eligibility criteria, then no capital gain tax. Okay, the benefit is that you don't have to pay capital gain tax over amalgamation of a company if you fulfill the given conditions under the Income Tax Act. And those conditions are, the first condition is the shareholders who were there in the existing companies in the amalgamating company should be there in the amalgamated company. Okay, so we call them amalgamating and amalgamated companies. Secondly, all the assets of the amalgamating company should be transferred to the amalgamated company. Then all the liabilities should also be transferred from the amalgamating companies to the amalgamated companies. And similar tax implications lies under demerger and slum sale. The only difference is in the concept. Under the case of demerger, basically there is one company which is getting separated, divided into 2 or 3 different companies. So that is called demerging itself. It is basically the opposite of amalgamation. And then there's slum sale. Slum sale is basically when you sell off a particular unit of your business
for a lump sum amount, and you do not value your assets and liabilities item wise. Okay, so there's a lump sum amount for buying a unit of your business. So that's it on our revision for corporate taxation. I know I've skipped all the numericals, but for the numericals are the lengthier portions for which the previous session online video classes are available to you. You can always refer to it. And we more or less we have discussed all the theoretical part. Okay, you have to stress on to the concept and the sections specifically from the perspective of tax planning. Okay, तो जो tax planning वाली पूरी unit है उसमें जो जो options आते हैं, whether it comes to nature of business or your location of business, you have to like carry off and set off of losses, section 72, closely held companies. Okay, you have to focus on these parts for the theoretical part. And for the numerical, again I am referring the questions that I have discussed in the classes were more comprehensive. Okay, those were highly difficult questions. Okay, so expect a little less than that from examination point of view. Any queries so far, or should we end up the class now? मैम मैडम the एक बार whole paper will be ट्रांसफर प्राइसिंग बताना, Sorry, एक बार ट्रांसफर प्राइसिंग बताना दोबारा से. transfer pricing. Okay, so transfer pricing is basically it happens between two or more associated companies. For example, if I buy raw materials from my own brother's company, okay, then this transaction might come under the lens of suspectability. Okay, I might have undervalued the transaction or maybe overvalued the transaction in order to reduce the tax liability. First of all, this is tax evasion. Okay, because I'm trying to show another price because I'm buying the raw materials from my brother's company only. So there is an associated enterprise, and I have the opportunity to manipulate the earth and the value of the transaction. That is called transfer pricing. Is this clear? Yes. बेसिकली भाई की कंपनी है, तो जो सामान मैं बाजार से 12 लाख रुपए में खरीद रही थी, तो भाई की कंपनी से 10 लाख रुपए में खरीद लिया. तो मेरे भाई की कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट कम नजर उसकी कंपनी में हुआ, तो उसको 2 लाख रुपए कम उसको मिले, और बाय चांस मैंने घर पे बैठे बैठे उसको कैश पकड़ा दिया, ये ले 2 लाख रुपए. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग. Please let me know if there's any further questions regarding the paper, the syllabus. हम करंट रेट मैम कहाँ पेपर से सारे एक्सेस करें? असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर के लिए जितने चेंजेस आए हैं रेट्स My PPTs are updated for the current rates. ओके, थैंक यू. ma'am what is important for the examination point of view that for 70 marks question? Obviously, I expect the paper to be numerically dominated. Okay, so I have tried my best to cover all the numericals with comprehensive understanding and provisions. So again, I repeat myself, the case studies that I have discussed in online sessions, try to like work around those. Okay, the case studies given in the SLMs again, but then again, I'm completely repeating myself. SLM से करते वक्त सोल्यूशन में करंट टैक्स रेट्स देख लेना एक बार, उनका आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ सकता है, but that is totally because the assessment year for you is 24-25 and the SLMs are solved according to earlier assessment years. And the whole paper theoretical, the lesser will be theoretical or more will be practical? I expect paper to be numerically dominated. So expect around 60% numerical. 60%.
This is a numerical based paper. Ma'am, And वो more will be the which topic will be mostly will be covered in the exam point of view. So since we don't have PYQ, I cannot tell you. I cannot make a guess about it also. But then again, the topics in the PPTs are given properly. You can also refer to the SLM provided to you. SLM is more or less your theory only. And transfer pricing is theoretical only, not for the practical. Transfer pricing is completely theoretical. Even if I have used a numerical to make you understand that, that is only for the pedagogical requirement. But that is transfer pricing and your DTA, the topics that we covered early up in the morning are completely theoretical. And the method of transfer pricing and foreign collaboration as the last unit is purely theoretical. Right, purely theoretical. You can focus on Indian-Mauritius treaty that I discussed in the morning. From theoretical perspective, the Vodafone case study, that is also important, because these are the like you can see landmark cases. Okay, ma'am. Madam, any difference from the MCOM level and MBA? Is it any difference there? Difference in the difficulty level? No, I am asking, is it same for MBA, which although it is the curriculum is not at all same. The curriculum is not at all same. If you can see the SLM for MCOM and the syllabus for MBA, these are quite different. Only a few parts of your curriculum are covered in MCOM SLM, not all. Your salary, your PGBP, your capital gain, all these parts are completely missed out from SLM, MCOM based. You don't have set off and carry forward provisions under the given SLM. मैम जो ये प्रेजेंटिव इनकम है उसमें सिर्फ सारे सेक्शन देखने 44 एडी वाले या एक सेक्शन 44 एडी 44 एडी और जो 44 एई वाला है वो स्किप कर देना है वो आप स्किप कर सकते हैं फाइन Ma'am, may I ask now? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Will you provide some solution based on the latest Income Tax Act? What you said, all the solutions that I have provided to you are based on the latest assessment year only. So you please give at least two example more for each topic. That I remember that I have to draft some new questions for you. So I'll do that. Solution also. Which solution? Which solution? I'll mail her. Fine. Just send me a mail about all the things that I have to send it to you. Okay? Maybe tonight or at max tomorrow's morning. I'll send those to you. Fine? Okay. Can I have your mail ID or our friend Atul will take this? Atul already has my email ID. Atul sir has. Atul will take care. अच्छा you have already paid me? हाँ जी ठीक है मैं check कर लूँगी not an issue. So this will be the basis for our preparation. Whatever you give us the question and their answers, that will be our basis to prepare. Sure. Okay, thank you very much. Okay. Welcome. Thank you so much, ma'am, for the limited time में हमने काफी ज़्यादा syllabus cover I tried my best because we had very limited sessions, no? हाँ But जी all the best everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much of you. Thank you. राकेश सर आप क्या कह रहे थे? अतुल जी ये आप कहाँ शेयर कर रहे हो? बलदेव सर मैंने शेयर आप ले रहे हैं सर टैक्स? हाँ कहाँ शेयर कर रहे हो आप? सर मैं आपको पर्सनल नंबर पे कर दूंगा. ठीक है पर्सनल नंबर पे कर देना. मैं आपके पर्सनल नंबर पे कर दूंगा. मेरे पास नंबर है आपका सर. ठीक है. सर आप टैक्स ले रहे हैं? हाँ टैक्स ले रहा हूँ.
सर आप तो मतलब टैक्स ही पढ़ाते हैं, आपको तो नॉलेज और होगा। नहीं, मेरे नॉलेज तो मेरा एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स है, ये सीटीपी नहीं है ना, टैक्स प्लानिंग का तो थोड़ा डिफरेंट है, कंपनी प्रोस्पेक्टिव से ना थोड़ा हाँ डिफरेंट है। जी, तो हाँ जी, थोड़ा हाँ सा जी, थोड़ी बहुत नॉलेज है, जैसे मतलब इसमें जो है ना कि जैसे SEZ का कैसे वो करते हैं, तो मेरे पास हाँ जी, इतना हाँ जी। अभी। पर ऐसा है कि एक्चुअली क्या है कि मैंने एक पेपर पिछला स्किप किया था, तो कौन सा वो सर? मैंने SAP को थोड़ा स्किप किया था, तो वो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कम इकट्ठे पड़ रहे, तो फिर मैं टैक्स पर दे देता हूँ, मैं कहा हाँ सेम ये डेट है तो ना। है। तो फिर हाँ मैं सर, कहा डेट शीट की चेंज भी कॉर्पोरेट तो टैक्स नहीं हुई है। इसको है, तो ये देखो ऐसा है, मतलब पढ़ना तो फर्स्ट टाइम ही पड़ेगा ना। एक्चुअली जैसे डायरेक्ट टैक्स है जो PGBP और ये सैलरी, ये तो मुझे आता है, लेकिन जो कुछ दो तीन पॉइंट जैसे है ना, ये कि भी जो आपका टैक्स कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है थोड़ा इतना टिपिकल नहीं है ये, मतलब अगर सर आप आप तो टीचिंग भी, आप सॉरी टू से अरे बट आप टीचिंग भी सर इनकम टैक्स और एक्चुअली मैं FME ना, तो करते हैं। नहीं वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, पर मुझे जो पॉइंट चाहिए था ना, मुझे ये चाहिए था कि जो इसमें कुछ चेंजेस है MCOM का और MBA का ना, सिलेबस बहुत डिफरेंट है, इनके पास स्टडी मटेरियल हाँ भी नहीं है, SLM है नहीं। तो अब हाँ जी। मैंने एक्चुअल कंफर्म किया था वहां से, वो कहते हैं कि इसको मैडम को जो है ना कुछ गाइड किया था कि ये आपको बताना है। अब ये पूरी चीज इसने बताई नहीं कि भी क्या सोच छोड़ना है, इसमें से क्या पढ़ना है। सर आप क्लास समझ रहे हो रिकॉर्डिंग में स्टडी अभी, है। क्लास अभी रिकॉर्डिंग में ही है। मैं समझ गया। नहीं, नहीं, मैंने कंफर्म किया था क्योंकि मैं तो टैक्स पढ़ाता हूँ ना, मुझे तो सारी चीजें क्लियर है ना इसके बारे में। तभी तो एक्चुअली तभी तो क्या सर ना, तो मैं आपको सर नहीं थर्ड तभी। सेम में पहचान गया था। मैं एक बार कॉलेज आया था अपने फ्रेंड के संग, उसके भाई के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैंने नहीं आपको है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव की क्लास में देखा था, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि मैंने कहा सर तो लग भी रहे हैं, नहीं भी लग रहे हैं। तो फिर मैंने कॉलेज की वेबसाइट चेक करी, हाँ, 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 हाँ। तो वहां पे तो आपकी मुझे फोटो दिखी। मैंने कहा अच्छा सर भी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं क्या थोड़ा सा क्या है, अब खत्म हो गया, अब तो अब क्या जो है ना, अब तो खत्म मानो। अब तो सर खत्म ही हो गया बिल्कुल। नहीं पर वैसे सर थर्ड सेम में SAPM का पेपर तो सिंपल आया था, आपको जब ही दे देना था। नहीं, नहीं, मैं आउट ऑफ इंडिया था ना एक्चुअली उस टाइम में। अच्छा। मैं इंडिया में नहीं था उस टाइम, अदरवाइज मैं दे देता। पर इसलिए अब मैंने देखा कि डेट शीट में ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हालांकि थ्योरेटिकली पेपर है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से बहुत इजी है। अगर कोई पढ़ना चाहता है ना, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग छोड़ सकता है। जो राकेश सर पूछ रहे थे ना अभी, तो इट इज हाँ बेटर जी, टू गो, अगर इस टाइम तो पेपर पास करने वाला मतलब वो है, तो बेटर है कि भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत इजी है, थ्योरी है पूरी हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम मान लो, अगर तो किसी के गट्स है तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग बहुत नॉलेजफुल पेपर है थोड़ा सा। अगर आप इसमें एटलीस्ट 10 days लगाते हो तो यू कैन गेट ए गुड मार्क्स। सर ऑन एन एवरेज तो ऑलमोस्ट जो टैक्स ले रखा है जिन्होंने, उन्हें पता है पेपर कहाँ से आएगा। नहीं देखो, जो एक्चुअली जो टैक्स का पेपर है ना, आपको इसमें स्कोरिंग पेपर है। जो आपको हाँ जी, फाइनेंशियल हाँ रिपोर्टिंग में कम आएंगे और इसमें ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली है, लेकिन ये मेहनत मांगेगा। ये तो है सर। अब जैसे आप है, आप तो 100% इसमें जो है मोर देन 50 से 80% मार्क्स स्कोर करोगे। थैंक यू सो मच सर। नहीं देखो, जो क्योंकि सर हार्ड हमने वर्किंग। हमने ना सर बोलो। MCOM में भी टैक्स पढ़ा हुआ है। हाँ, फिर आपके लिए बहुत इजी है ये। थोड़ा सा हमने MCOM, देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका थोड़ा स्कोर खराब कर देगा, और कितना लिखोगे उसमें। सर लेकिन वो ये अभी तो पेपर तो कुछ अलग ही जा रहा है, वो तो कुछ ही। नहीं, मैंने देखा उसका सिलेबस पर थ्योरी बहुत ज्यादा है उसमें। सर लास्ट के 2 चैप्टर तो प्योर थ्योरी है। मुझे तो लग रहा सारा ही थ्योरी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं में नहीं कुछ सर, है। सर बीच में ना थ्योरेटिकल कम है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा है, तो उससे कवर अप हो जाएगा सर। अच्छा, उससे इसकी कवर क्लास अप है हो तो जाएगा। कोई नहीं, क्लास तो कोई भी नहीं हुई इसकी। सर मैंने तो एक भी नहीं ली है, सिर्फ 2 छोड़ के शुरू की। आपने तो सर सारी क्लासेस ली हैं। नहीं, मैं क्लासेस लेता हूँ पर साथ में कुछ काम भी तो करता रहता हूँ। हाँ ये तो सर, वो एक बार आपका माइक ऑन रह गया था तो पीछे से पता चल ही रहा था। चलो, अतुल जी शेयर कर देना पर्सनल नंबर पे जो भी PPTs वगैरह जिस भी सब्जेक्ट के आपके पास है ना। मैं सर आपको ऐड कर लेता हूँ ग्रुप में। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू बॉस। ठीक है सर।
नहीं नहीं सर, Thank you. ऐसे मत बोलिए, थैंक मत बोलिए सर, बॉस मत बोलिए, स्टूडेंट ही हूँ सर मैं। नहीं सर चलो, ऐसे मत बोलिए। ठीक है सर, मैं या तो मैं आपको ऐड कर लूंगा, नहीं तो फिर टीम के थ्रू सर पर्सनल चैट में आपको रख लूंगा। ठीक है, डन डन डन, ठीक है सर। ठीक। जी सर।